बोलिए ना, सबका स्वागत कीजिए। जी, थोड़ी आवाज आपकी थोड़ी स्पष्ट नहीं आ रही थी इसलिए। अच्छा, ये लगा लेता हूँ। प्रणाम। आनंदमानंद परम Honorable Panda, Vice-Chancellor, Kolhan University, Singh, Jharkhand. साउंड बढ़ाई। सर अजीत कुमार मंडल साहब, प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता शर्मा सर मैम, प्रोफेसर उत्तम पति जी, स्वामी दिव्य चेतनानंद जी, सेक्रेटरी रंसन यूनिवर्सल एंड मूविंग स्पिरिट बिहाइंड द वेबिनार, प्रोफेसर रामनाथ झा सर, स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज JNU, प्रोफेसर प्रीति लक्ष्मी जी, प्रोफेसर सुरेंद्र पांडे जी, प्रोफेसर विश्वजीत भौमिक जी, and all other participants and esteemed intellectuals and sadhaks of the Ananda Marga. I extend my warm welcome and greeting to all of you at the outset of this two-dimensional webinar on the philosophical contribution of Shrii Anandamurtijii. Contemporary Indian philosophy has been basically a dialogue between individual philosophical creativity of present and the lofty philosophical tradition of classical thought. In both classic and contemporary Indian philosophy has not been a plain and dry intellectual exercise, but an endeavor that has to do with real and practical life around. Guruji, the way Anandamurtiji philosophy is characteristically Indian in both these. This philosophy is fundamentally an attempt to fashion up the understanding of classical systems of Indian philosophy, such as Vedanta, Tantra, and Sanskrit, and also an attempt to provide a new vision for human life by churning the ocean of Upanishads and other classic texts. The new vision for human life came in the form of Anandamurti. The most powerful idea that came from Anandamurtiji were a result of the beautiful synthesis which is he made between Vedanta and Tantra Darshan. Nevertheless, his basic vision was Upanishadic insofar as he declares the ultimate nature of reality as pure consciousness. This is for the sure a development of Anandameva Brahma. Anandamurtiji made contribution to almost all branches of philosophy as metaphysics, cosmology, psychology, ethics, socio-political philosophy, social sciences, languages, and natural sciences. Anandamurtiji sees Jagat as a flow from limitless consciousness to limitless consciousness and back to limitless consciousness attained by meditation. For Anandamurtiji, the mind is to be seen as 5-layered sheet comprising of 4 sides. Kammaya course, layer of desire, Manomaya course, layer of thinking, Ati Manas course are mental mind, Vijnanmaya course, layer of spiritual knowledge,
student may course the golden level or subtle causal mind. Similarly, the concept of biopsychology, microvita marks a confluence of metaphysics, speculative psychology, and life sciences. In the realm of socio-political economics, he offers a fresh version of Gangadhar. His notion of progressive utilization theory is practical means to encourage harmony and cooperation to help society. Anandamurtiji's conception of new humanism is the extension of the spirit of humanism to everything animate and inanimate and universe. His vision of culture is essentially a radical form of universalism and cosmopolitanism. We hope that in coming 2 days they will witness very fresh discussion on the cosmology, psychology, biopsychology, socio-political philosophy, philosophy of culture, neo-humanism. We also expect that the same will open a new avenue of dialogue between contemporary and classical Indian philosophy. Once again, I extend warm welcome to all of the august intellectuals and participants in this Jnana. Om Hari Om Tat Sat. Thank you. Now I like to request Professor Surendra Mohan Mishra sir, eminent scholar of Sanskrit and philosophy, Kurukshetra University, to chair the session and proceed with the inaugural session. And I also request to Professor Gangadhar sir, Honorable Vice-Chancellor, Kolhan University, Jharkhand, to grace the occasion. Who will speak first? Should I speak now? Professor Arvind Vikram Singh ji, should I start now? Yes, sir, yes. Yeah. Smrutapi taruna tapam karunaya haranti nruna mabhangura tanatti sambalaita satir viddutam kalinda naganandini tatasura druma lambini madiya mati chumbini bhavatu kapi kadambini. Respected Acharya Divyachetnananda Avadhut ji, the Secretary of Center for RU, and Professor Arvind Vikram Singh ji, Professor and Head, Department of Philosophy, Rajasthan University, and Professor Surendra Mohan Mishra ji, and I am able to see many faces, but I know Professor Jha ji is seen, and I welcome and pay my respect to all dignitaries and galaxy of scholars who are assembled here in this gathering. The title given to me and given to this session is Anandamurti's contribution to neo-humanism and neo-humanistic education. This is the topic. We have to concentrate all these things. In the beginning, I apologize that I am not a scholar of Ananda Marga, but I know something as a student only. But I am not a scholar, but you have given me respect and honor and allow me to be the chief guest on this August session. Before starting, to say something about this Ananda Margas, I shall begin with a traditional verse in Sanskrit, that is, Dravyani bhumau vasavascha goshthe bharya gruhadwari jana smasane dehas chitayam paraloka marge karmanugo gacchati जीवैका. इसका एसेंस यह है कि द्रव्याणि भूमौ, कि जो भी हम संपत्ति अपने जीवन में इकट्ठा करते हैं और जब हम इस लोक को छोड़ करके जाते हैं, सारी संपत्ति यहीं पर रह जाती है, या तो घर में, या तो ट्रेजरी में, या तो बैंक में. पशवश्च गोष्ठे, पहले हमारी संपत्ति को हम पशु
के द्वारा जानते थे, इसीलिए राजाओं को अश्वपति, गजपति, नरपति ऐसे संबोधन करते थे। इसीलिए जो भी पशु संपत्ति है वहीं पर रह जाएगी। और आज के आधुनिक समाज में इसको हम कहेंगे तो जो भी आपके गाड़ियां है, हेलीकॉप्टर है, वो भी अपने गैरेज में, यार्ड में रह जाएंगे। भार्या गृहद्वारी, और जो पत्नी है वो भी अपने दहलीज तक रहती है। जना स्मशान है, जो मित्र मंडली तक जाएंगे वो स्मशान में रह जाएंगे। देहस्थितायाम, जो शरीर को इतना हम भोजन दे करके पल्लवित किए हैं, पुष्ट किए हैं, वो आग लगते ही शरीर छूट जाएगा। लेकिन साथ में कौन जाएगा? वो कर्म ही जाएगा। इसीलिए मनुष्य आनंद मार्ग के अनुसार अगर मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, और कर्म कैसे हो ना, अपने ज्ञान के वृद्धि के साथ आपका समाज में, समाज की भी उन्नति आपको करनी है। वो विश्व भातृत्व की कल्पना देते हैं। इसीलिए दे हैव कंसिडर्ड टू वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड. There should be proper coordination between spirituality and spiritual world and physical world. इसीलिए जो वो कल्पना है, वही तत्व को, ये हमारे जो सनातन परंपरा है, वो सनातन परंपरा का ये एक अलग पंथ है। ये अलग से अलग नहीं है, कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, लेकिन हमको समझना चाहिए जो वैदिक कंसेप्ट है और हमारे जो आगमिक कंसेप्ट है, दोनों का ये मिला जुला स्वरूप लेकर के ये आनंद मार्ग का स्थापना हुआ है, जिसका संस्थापक, जिनका पूर्व नाम जब सन्यासी बनने से पहले उनका नाम था प्रभात रंजन सरकार जी, बाद में ये आनंद मूर्ति जी हुए। उनका जो मार्ग है वो आनंद मार्ग हुआ। 1921 से 1990 तक इनने इस आगे बढ़ाया। आज की स्थिति में जो आंकड़ा मेरे पास है कि इसमें 130 देश में ये आनंद मार्ग का संप्रदाय व पंथ फैल चुका है, ये विचारधारा विकसित हो चुकी है। इसीलिए और इस विषय पर भी 350 से अधिक पुस्तक जो है उनके द्वारा प्रकाशित है। ये एक आत्मोद्धार का मार्ग है, जो कि तंत्र, योग, ध्यान और एकेश्वरवाद का एक मिलित संगठन रूप है, जिसमें सेल्फ लिबरेशन और वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी की चर्चा होती है। इनका ये कहना है, जो वेदांत का कंसेप्ट है कि समग्र यात्रा हमारी अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक यात्रा चलती है, और मनुष्य जब आनंदमय कोश तक पहुंच जाता है, वो उसको लिबरेशन हो जाता है, वो ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाता है। तो अन्नमय कोश से प्राणमय कोश, प्राणमय कोश से मनोमय कोश, मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश तक आदमी पहुंच जाता है। वहीं जाकर के उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। तो लेकिन आनंद मार्ग संप्रदाय में ये कहते नहीं, आपको समाज के लिए करना है, इसीलिए आप अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक पहुंचने के पश्चात पुनः आपको अन्नमय कोश में आना है, क्योंकि आपके जो फेलो बींग्स है उनका भी आत्मोद्धार आपको कराना है। इसीलिए वो चाहते हैं, जब भगवान को हम भगवान का दो रूप है, भगवान का विस्तार एक सूक्ष्म रूप है, ये विराट रूप है। भागवत कहता है खम वायु अग्नि सलिलम महिश्च, पूरा श्लोक मैं नहीं बोल रहा हूं। खम आकाश, वायु, अग्नि, सलिल और ये पृथ्वी, ये सरित, ये सारे चीज जो है भगवान का अंश है। इसीलिए आनंद मार्ग में वही है, एक भौतिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत है। मनुष्यों में मन का प्रभाव अधिक होने से इसका मन और विवेक को लाकर आगे बढ़ता है। वृक्ष जगत में व जड़ जगत में यद्यपि भगवान का सत्ता है, लेकिन उनमें मन नहीं है। मन न होने से वो उतना विकास नहीं कर पाते। और जो साधारण मानव है, जैसे भर्तृहरि कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् व समानमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभि समाना। तो आहार निद्रा भय मैथुन तक जो है हमारे कुछ अनेक जो जन समुदाय उसमें रह जाते हैं और आगे वो बढ़ते नहीं।
जैसे एक मैस्लो, अमेरिकन एक साइकोलॉजिस्ट हुए मैस्लो, वो भी कहते हैं एक मनुष्य का हायरार्की के लेवल में डेवलपमेंट होता है। एक होता है पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी, उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वही वो चीज कहते हैं हम लोग, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, ये और आगे स्टेप जाकर के मैस्लो कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन इसमें कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन करो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करो, फिर आपको धरती तक आना पड़ेगा, क्योंकि आपको संभू या समुत्थानम जो हमारे शास्त्र का वाक्य है उस पर वो करना चाहते हैं। वो कहते हैं इट इज नॉट यूनिलैटरल, इट इज म्यूचुअल। आप जो है ना एका की जो आपका ब्रह्म ज्ञान हो गया, आपको मोक्ष मिल गया, वो नहीं, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो समाज है, इस समाज को लेकर आपको चलना है। इसीलिए बाह्य न हो करके आपका विकास आंतरिक होना चाहिए। जैसे कि उसमें शास्त्र का कई उदाहरण दे सकते हैं। जब हम एक पद आगे बढ़ते हैं, भगवान 20 पद आगे बढ़ करके वो सहायता करने आते हैं। एक उदाहरण स्वरूप लोग उदाहरण में देते हैं, दुर्योधन का उदाहरण देते हैं। दुर्योधन आगे बढ़ना नहीं चाहता था, इसीलिए गांधारी ने जितना भी उनको शक्ति दी, जितना अपने दृष्टि पूत करके उनका शरीर को वज्र कर दिया, लेकिन उनका जिस हिस्सा में वो आवृत करके आया था उस हिस्सा उसका कच्चा रह गया और भीम ने गदा से उसको तोड़ दिया और उसकी मृत्यु हुई। एवं भले भगवान कृष्ण को इसके कारण गांधारी का शाप ग्रहण करना पड़ा। गांधारी ने कहा कि जैसे मेरे देखते हुए और मेरे वंश सब नष्ट हो गया, इसीलिए भी आपको देखते हुए, आप भी देखते हुए आपका यदुवंश संपूर्ण नष्ट हो जाएगा। एक उदाहरण है, भगवान कृष्ण अपने अवतार में ये दिखा दिया कि भगवान समाज का उद्धार करते हुए भले ही अपना ही विनाश हो जाए, इसीलिए अपना वंश का विनाश उन्होंने किया, लेकिन समाज का उद्धार किया। और जो उनको आश्रित करता है, नहीं भी करता है, उसको भी उनका भी मोक्ष देते हैं। भागवत में प्रसंग आता है, गोप्य प्रेमणा, मार्ग अलग है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये एकम सत वही सत्य है, ब्रह्म सत्य है, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो भिन्न मार्ग से उनको समझाते हैं। इसी प्रकार के भगवान के तत्व को समझने के लिए किस प्रकार माध्यम अलग अलग है। दिल्ली जाने के लिए यहाँ से कई मार्ग है, रांची होकर जा सकते हैं, इधर आपका कटनी होकर जा सकते हैं, इधर बनारस होकर जा सकते हैं। इसी प्रकार के भगवत प्राप्ति के लिए कोई जो है ना माध्यम अलग है। गोपी अपना प्रेम से, सारे गोपांगनाएं वो अपना प्रेम से भी भगवान को जो है प्राप्त कर लिए। इसीलिए उद्धव भागवत में कहते हैं, आसाम हो चरण रेणु दुसाम हम श्याम। मैं श्लोक का उदाहरण नहीं दूंगा। उद्धव जी कहते हैं, मैं तो गोपियों का चरण धूल का प्राप्त करने के लिए अगले जन्म लेना चाहता हूँ वृंदावन में, और पेड़ पौधे और गुल्म के रूप में, ताकि गोपियों का चरण धूल मेरे ऊपर पड़ सके, मैं पवित्र हो जाऊं। कारण उन्होंने जो कुटिल पथ को, अपने जो परिवार का सुख को छोड़ करके, अपना पति को छोड़ करके, पुत्र को छोड़ करके, सास ससुर छोड़ करके भगवान को अपना प्रेम से जीत लिया। सारे वेदों भी अपने स्तुति के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन गोपी लोग प्राप्त कर लिए। इसीलिए जब आप तक बिल्कुल आप समर्पित भाव से भगवान को नहीं चाहेंगे, भगवान आपको मिलेंगे नहीं। गोपी लोग प्रेम से प्राप्त किए। और कंस जो है भय से, अपना भय से कंस मारा गया। जैसे वेदांत में कहता है, कीट को जब कोई मारने आता है, कीट वो अपना दुश्मन को देखता है अपने में, तब वो मरता है। और शिशुपाल आदि ईर्ष्या से मर गए, और माने ईर्ष्या से भी भगवान को प्राप्त किया, भगवान में लीन हुए और अपने गोलोक धाम को प्राप्त कराया। और वृष्णि अपने जो विष्णु के, मतलब कृष्ण के जो परिवार के लोग है, ये अपना संबंध से, अपना रिलेशन से और स्नेह से, युधिष्ठिर प्रभृति अपना स्नेह से, और शेष रहा भक्ति। जे लोग आम जनता है, नारद, ये नारद की उक्ति है। नारद कहते हैं कि हम भक्ति से भगवान को प्राप्त करते हैं। कोई भले प्रेम से करता है, कोई भय से करता है, कोई ईर्ष्या से करता है, कोई संबंध से करता है,
कोई स्नेह से करता है और भक्ति करते हैं। ये भी हमारे जो आनंद मार्ग है ये भी भक्ति को मानता है। और सा विद्या जा विमुक्त है, ये एजुकेशन का कंसेप्ट है। जो विमुक्ति, जो मुक्ति दिलाए वो विद्या है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। आनंद मार्ग को अगर हम समझेंगे 3 स्टेप से वो बात करते हैं। नंबर 1 स्पिरिचुअल कल्ट, उसको व्याख्या करते हैं फिलोसफी स्पिरिचुअल इनिक्यूशनल अप्रोच, इसको व्याख्या करते हैं। मतलब स्पिरिचुअल कल्ट के व्याख्या, पहले अपने को भौतिक जगत से जोड़ करके आप आहिस्ता आहिस्ता, शीघ्रता से नहीं होगा, अपने तपस्या से, अपनी साधना से आपको जा करके उस स्थान को पहुंचेंगे। तब आपके आनंद मार्ग के अनुसार आप सदविप्र कह जाएंगे। उनको देते हैं सदविप्र। यहाँ पर विप्र जो है, विप्र का विशेषण सदविप्र, अच्छे मनुष्य होंगे, ये स्पिरिचुअल कल्ट है। उसके बाद सेकंड स्टेप है साइको इंटेलेक्चुअल अप्रोच। मतलब आदमी को एक नया, इसको वो दूसरे ढंग से कहते हैं न्यू ह्यूमनिज्म। आपको मानवता का श्रेष्ठ उदाहरण बनना पड़ेगा नए ढंग से। मतलब केवल आप मानवता बनकर अपने आत्मोद्धार तो करिए, जगत का उद्धार भी करेंगे। इसीलिए उनका कंसेप्ट में आता है, जो उनका लोगो है, वो लोगो है आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। अपने आत्मा का मोक्ष हो और जगत का मंगल हो, तो वही है। इसलिए जब तक मन में आपका अहंकार आएगा आप नहीं कर पाएंगे भगवत की प्राप्ति। भगवान अहंकारियों से दूर रहते हैं। इसलिए शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं अभिनयम अपनय विष्णु दमय मनः समय विषय मृग तृष्णाम भूत दयाम विस्तारय तारय संसार सागरता। अगर ये कंसेप्ट मिल जाएगा, ये कितना मिलता जुलता है। अभिनय, ये अहंकार को, हे प्रभु मेरे अहंकार को दूर करो। दमय मन विषय मृग तृष्णा, मेरा मन जो है विषय मृग तृष्णा की ओर भागता है, उसको दमन करो। इसीलिए एक गरुड़ पुराण में एक पद्य आता है, मातंग कुरंग पतंग भृंग मीना हतः पंच वीरेभ पंच असौ प्रमाथी कथम न हन्यते यह सेवते पंच वीरेभ पंच। कि एक का उदाहरण दिया तो मातंग मतलब हाथी जो है, केवल नारी का, हथिनी का स्पर्श सुख पाने के लिए वो गड्ढा में पड़ करके बंधन को प्राप्त होता है। और भ्रमर जो है ये फूल के अंदर बन जाता है, केवल एक ही इंद्रिय का उसका आसक्ति है, वो गंध के द्वारा मोहित हो करके मृत्यु को प्राप्त होता है, फूल के अंदर बंद हो जाता है, बाहर निकल नहीं पाता है। हरिण जो है ये अपना कर्ण, मतलब उसका शब्द का प्रति आसक्ति है, वो शब्द सुन करके व्याध के जाल में फंस जाता है। मछली जो है उसका रसन इंद्रिय बहुत तेज है, इसीलिए बंसी का कांटा में वो फंस करके मृत्यु होती है। इस प्रकार के जो 5 इंद्रियों के प्रति 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय के प्रति आसक्ति होने से उनकी मृत्यु होती है। और मनुष्य तो 5 इंद्रियों के वशवर्ती है समान रूप में, इसीलिए मोक्ष कैसे होगा। इसीलिए जब आप अपने गुरुओं के द्वारा, अपने परंपरा, अपने पंथ के मार्ग के द्वारा अगर अनुसृत नहीं होंगे, इसीलिए वो कहते हैं कि इसलिए आत्मोद्धार करने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। आप देखिए सभी लोग जो भी हमारे दर्शन में है, शास्त्र में है, ध्रुव कहिए, प्रहलाद कहिए, आपके भगवान का अनुग्रह चाहिए। ध्रुव 5 साल का बालक था, वो भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान उनके कपोल में शंख का स्पर्श कराए। 5 साल का बालक बोलता है, जो अंतः प्रविश्य मम वाच माम प्रसुप्ताम संजीवयत्य अखिल शक्ति धर स्वधाम्ना अन्यांग सहस्त्रचरण श्रवण त्वगादीन प्राणान्नम भगवते पुरुषाय तुभ्यम। इतना एलिवेशन होने के बाद मनुष्यत्व को प्राप्त होगा। अब देखिए रावण का दोनों का शत्रु है, लेकिन रावण का मुख्य जवाब उनका पूर्व जन्म का इतिहास देखते हैं वही जय था। बाद में वही हिरण्यकश्यप बना, वो फिर रावण बना, बाद में शिशुपाल बना, फिर उसका आत्मोद्धार हुआ आया। इस प्रकार देखते हैं, इस प्रकार के इनका जो सेकंड स्टेप है न्यू ह्यूमनिज्म व नव्य मानवता का जो चिंतन उसमें है।
थर्ड स्टेप जो उनका है, ये बहुत सुंदर है, कल्पना है, वो है साइको इकोनॉमिक अप्रोच, जिसको कहते हैं प्राउट बाय प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। तो इस पर चिंतन है कि बहुत सारे स्थान पर खाद्य नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ को खाने को नहीं मिलता है। तो आपका आध्यात्मिक स्तर इतना बढ़ जाए कि आप मेरे भी भला हो और मेरे साथ में जो है उनका भी भला हो। इस प्रकार के जब भोजन को इसके लिए आपको एक मानस स्तर पर आपको एक चिंतन करना पड़ेगा। इसीलिए भारतवर्ष के व विश्व के जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें भी आपको मेंटल सेट करना पड़ेगा, ताकि कोई एक भूखा न रह जाए। साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि भी भूखा न जाए, जो वचन है। इस प्रकार वचन को ध्यान रखते हुए ये भी कहा गया है। और इस प्रकार के जो जैसे शंकराचार्य को मानते हैं लोग, ये पूरा अद्वैती है, लेकिन जब ये पंचदेवों का भी उपासना के लिए स्तोत्र लिखे हैं, और तंत्र का जो उनका बहुत है, जो शक्ति परक है, वो सौंदर्य लहरी, वो कहते हैं शिव शक्त्या युक्त यदि भवति शक्त प्रभवितुम। तो कहते हैं कंसेप्ट में शिव और शक्ति के मिलने से सृष्टि होती है। इसी प्रकार के इस दर्शन में यदि वैदिक दर्शन के साथ तंत्र को मिलाएंगे, तब जाकर के ये हम इसका विश्व का कल्याण हो पाएगा। इसीलिए जो विश्व भातृत्व की कल्पना है और इसको लेकर के ये जो आनंद मार्ग बना है, इस मार्ग के अनुसार मैं समझता हूं हम एक विचारधारा है। इस विचारधारा में विश्व का कल्याण होगा, आत्मा का अभ्युदय होगा, और हम जो दिखे हैं, जो हमारे सामने प्रमाण है, उस प्रमाण को हम लेते हुए हम ये कहेंगे, ये जो ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म का जो आनंद को, इसको समाज के तरह खींचना पड़ेगा। इसलिए विश्व भातृत्व की कल्पना है, आत्मोद्धार की कल्पना है। ये के अलग प्रकार के विचारधारा, मतलब ये भारतीय विचारधारा है, सनातनी विचारधारा है, लेकिन एक भिन्न प्रकार की दृष्टि है। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और विशेष करके मैं दिव्य चेतनानंद अवधूत जी को मैं साधुवाद देता हूं कि ये इस कार्यक्रम में मुझे वो जुड़े हैं, और इसके बहाना में और जितने लोग अभी मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, प्रोफेसर अरविंद विक्रम सिंह जी, प्रोफेसर झा जी, प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी, और तमाम और एक हमारे महात्मा जी नजर आ रहे हैं। मैं सभी को साधुवाद देते हुए और मुझे जो कुछ कहने के लिए अवसर दिए, मैं इसी के कारण अपना आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही थी ना? हेलो, स्वामी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ अरविंद जी, हाँ अरविंद जी, सुनाई पड़ रही आवाज? अरविंद जी जरा, अब सर का लेक्चर खत्म हो चुका, अब सेकेंड जो कार्यक्रम हम लोग शुरू करें। हाँ सर। इनके बाद क्या है, मैडम का गाने का प्रोग्राम हो गया? जी सर। अब प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे, एमिनेंट स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड फिलॉसफी। नहीं, इसके पहले उत्तम पति जी माइक्रोवाटा के ऊपर बोलेंगे। ही इज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, और चेयरपर्सन बाद में, जो लेक्चर होगा बाद में। पहले हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उत्तम पति जी, वो माइक्रोवाटा के ऊपर, जो आनंद मूर्ति जी का साइंस का विषय है, कोविड-19 और निगेटिव माइक्रोवाटा में क्या सिमिलरिटी है, रिसर्च का विषय है, लेकिन वो इसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रोफेसर उत्तम पति जी को कि माइक्रोवाटा थ्योरी पर आप अपना वक्तव्य रखें। दादाजी कितना मिनट बोलना है आज? 25 मिनट बोलिए। अच्छा, और काल के मेरा टॉक है, काल
बताए थे? नहीं, और आज ही मैंने 30 मिनट लेके खत्म कर दीजिए, अच्छा ठीक है। आधा घंटा। एक सेकेंड, जरा 1 मिनट रुकेंगे। हाँ हाँ ठीक। कुलपति जी नहीं पढ़ रही है? हाँ बोलिए जी। हाँ, गुरुदेव जी एक किताब लिखे हैं और उस किताब का नाम है माइक्रोवाइटम, और सिंगुलर नंबर में माइक्रोवाइटम बोलते हैं, प्लूरल में माइक्रोवाइटा। तो इनको आप जरूर सुनिए, किस तरह से उन्होंने साइंटिफिक व्याख्या की है। ऑफकोर्स रिसर्च का विषय है। मैं पूरा सुन रहा हूँ। हाँ, तो उत्तम पति जी एमिरिटस मेडिकल साइंटिस्ट हैं जेएनयू में, और पहले डीन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रह चुके हैं जेएनयू के ही। तो काफी इस पर रिसर्च का काम कर रहे हैं। तो अभी उत्तम पति जी बोलेंगे। ठीक है, बोलिए। ये I speak in English? या Okay. Anandamurtijii wrote around 300 to 50 books, and if you go through all these books, it is I classify them into actually 5 categories, and out of these 5 categories, I'll explain later. One is actually prime goal was change in the society. Now, second goal is transformation. Transformation means individual transformation, and taking individual as a source, he want to have a social transformation. The second phase. I'm just trying to, because I read all the books, so these 5 points have come to my mind over years, and then I will explain specifically about the focus on the microbiome. So first, actually, his whole goal was to bring a change in the society and change in the individual. And second goal is transformation. Change and transformation are 2 different subjects. Transformation means it is transformation all over the body, all over the mind, all over the physical plane, all over the psychic plane, all over the mental plane. And also, after this change, transformation, one can go to the spiritual plane. And achieving these 2 states, one then leads to devotion. Devotion followed by ideation. Devotion is actually, I think, is the 3rd stage, where someone is ready, calling themselves a devotee or a person who is ready for service. And then the 4th stage, which is very important, after you qualify in the 3rd stage, you then get into the 4th state. We call it connection. That means the individual has to know how to connect to different levels of his consciousness, at the same time connect to the society at different level of his workforce. So the first is change, then transformation, then devotion, then connection, and the last phase is for survival. He has to grow a fearless resistance, and this fear goes away only after you achieve these 4 stages. And why fear is necessary to remove? Because unless you remove the fear from yourself, you cannot think of changing the society where most people live in fear in every generation, every Yug. So these, if you check all the books, if you read it as a reader, because I don't have a philosophical background, I'm just talking as a reader. So I have classified all his writings into change, transformation, devotion, ideation, then connection, then resistance. So this is the individual path, this is the social path, is the individual participating in bringing a change in the society also. So this is not in the, I'm not mentioning in the philosophical context because I lack the background in philosophy. This is my analysis. Okay. Now, out of all these books, 2 books interest me over years. One is Ananda Sutram, one is Microvita in a nutshell. If you see, there is a link. Ananda Sutram was written in 50s and Microvitum was written in 90s, just before his departure. There was a 30 years gap. Now, if you see, these 2 books I am consider the most important contribution of Prabhatana Sarkar, aka Anandamurtijii. As Anandamurtijii, Ananda Sutram is comprehending all the philosophical abstract concept of our whole civilization. And the second part is the Microbitum, which is written in English, and Ananda Sutram written in sutras,
is a classical style of writing philosophical context, whereas Microvita is written in title is Latin, Microvitum. Micro means small, vita means life. Microvitum is Latin, and the language he has chosen is English. And name also is changed to PR Sarkar. So these two are so nicely designed. It's a 30 years gap, so that when you give the classical context of philosophy, putting the book in the archives of the Indian civilization, then he has to move into application mode. So two worlds. One is the subtle world, one is the crude world. So his main criteria is to always giving methodology, protocol, concept, experimentation, how to connect or understand the subtle crude transition or the crude subtle transition. So this is basically the journey which covers all this part I mentioned: change, transformation, devotion, connection, and resistance. So this is, as you see, this Microvitum. What was the purpose of writing the original text? Is a philosophical context. They're actually both complementary. Written in Sanskrit in sutra format, and after 30 years, following an English language, changing the name to PR Sarkar and giving the Microvitum. So there is, I see there's a hearing nice, looks nice, Ananda Sutram and Microvitum. So this also basically justifies his linguistic interest. He's a great linguist of the origin of the languages, starting from Indo-European, where the Sanskrit comes from, and obviously the modern romantic language is English, where the scientific language. So he had two things in mind. One is Ananda Sutram, giving the archives, giving the philosophical test to the headquarters of philosophical archives, that's Hindustan in India, and transmitting this in application mode, on a more abstract mode, which in English. That's definitely he meant to being it's a scientific text. So now, unless you take the philosophical context and the application part, the scientific part, so there is no way philosophy stage philosophy, science stage abstract. So this is the first example, I think, he has very thoroughly designed that philosophy and science, he has mixed it so nicely, which could be only called as subtle crude transition or crude subtle transition. That means in the philosophical state, it is a subtle state. And in the crude state, there is an experimental state. Now, every individual, for example, has to do experiment with himself. Just like every cell in his body, we have 50 trillions of them. Every cell has a mind, and all the cellular minds also have a crude and subtle state. And of course, the cosmos and the galaxy and the creation of stars, creation of everything, planet, dark matter, they're also part between the crude and subtle. Unless there is an explosion, there won't be creation. And when the explosion doesn't recede, then that there has to be creation has to continue. It has to recede one day also. So this context I mentioned, that what was the point of writing Ananda Sutram and Microvitum, and in a 30 years gap. Once he established the society with a philosophical context, with code of conduct, with specific instruction how to follow, lead a life, he has moved slowly into more abstract form. And the abstract form, he actually gave it just before his departure, I guess 2 years before his departure. And he casually mentioned that this Microvitum theory is given before time. Maybe it's given 200 years before it is happened to be a scientific subject. And by that time, the society will be highly developed so that people can do very advanced future science for all their well-beings. And that's why the Microvita book was not very popular so far. It was written, given in 1988 or 99. But as you see, after around 40 years also, very few people understand it, because he mentioned he's giving it an abstract. But as he explained, as he planned, as he designed, Microvitum has become very popular in the Western countries. And the Sutram stage is archived in the library, which for the headquarters of the philosophical library, where Microvitum has to find its way into every society, every laboratory, every mind. So looking for what exactly this is. So Ananda Sutram, Microvitum, they're actually complementary. They're almost same, but one in a subtle state, one in the crude state. Microvitum at this stage, when you compare to the Ananda Sutram, is a crude state. But when you go to Microvitum also, there is also subtle and crude state. Now, last around 10 years, for example,
microbiome has been so popularized, so accepted by the scientific community in the West, and they are thinking this actually with the future science and future technology. Now, any technology science has come over the last 20-25 years, you find automatically some way fitting into microbiome. So that means he cleverly gave this Latin name, because the whole concept and the text of science are actually we take as Latin as the root. Any name, any plant, any animal, any name we give a new gene also, we actually follow the Latin root. So he has carefully done that because he knows there are two different worlds we live in. One is the Oriental world, one is the Occidental world. And in the Oriental world, such as with the Eastern people, we are more philosophical, more emotional, and more, we protect the, we conserve things here. But in the Occidental world, where life is much more harsh, without technology, the society and the people cannot survive because of the temperature, because of the climate, because of other factors. So there actually science become a necessity. And as you realize, for today's example I gave, as you see, we have everything, as I mentioned, philosophical text, but we don't have a COVID vaccine. And we are going to beg Western countries again for a second date vaccine from Oxford, which they themselves claim it 70%. Whereas the first class vaccine for COVID is they claim it is more than 95% efficient. Americans say they won't give to anybody, they will first take care of themselves. So as you see, this idea of technological development always will come from Occidentals because they are meticulous, they're rational, and they're honest, and they don't bother about philosophy anyway. But the question is, their whole this idea, his first time here, that Anandamurtijii has combined the philosophical context with a scientific context, with a definitely a guideline and a timeline and the protocol, how to approach these two, staying together, both sides of the coin. You will develop the society, develop the mind, develop the individual, develop the brotherhood, and develop the scientific technology for the future, so that when society is ready, new science comes in, it will automatically become symbiotic for sustain of the civilization. Okay. Now I'm giving a very introduction. I'll move little slowly about microbiome. What is the context here? Microbiome, for example, it is basically hypothesizes. At this stage, I can't call it a hypothesis because officially he is not a scientist. So obviously hypothesis comes, rational and hypothesis, they are scientific doctrines. Speculation is not science. Abstract may not be science. Here says the microbiome. So it's an abstract means he's giving a hint that there is a possibility of such a cosmic party or a cosmic entity which basically floats across the universe, creating life and destroying life. So this is the way whole civilization, not only planet Earth, has been replicated across hundreds of planets and galaxies in the universe. So this, for example, this virus, he himself calls virus is also a microbiome. Now, interestingly, if you want to know little about virus in the present context, virus is there actually for billions of years. And virus travel across the galaxy, across the cosmos. They take a help of a meteorite which traveling in the space and they stuck to them and they are considered non-living. But when they are non-living, as long as for millions of years, when they are floating around without replicating themselves or finding a support system, they only find a support system when there is a biological system, or a cellular system, human as a host, animal as a host, plant as a host. They can replicate themselves and they will sustain themselves. And now, hello, can you hear me? Just vanished. Okay, yeah, listening. Can you hear me? Okay. Okay. I see some Surendra Panda is presenting coming now. Once again, in this, you have finished your lecture? No. I'm not finished. Okay. So now this context of the virus, I can explain to you briefly that this virus is a microbiome. Now, microbiome have many sizes. One example I gave virus because virus is a mixture of both non-living and living. When they're non-living,
They can't propagate themselves, they can't create disease, and they can only sustain wherever they stay. But when they find a host, आपका कंप्लीट हो गया क्या? hello, एक ही गाय है ना? can you hear me? गाना गाय Can you hear me? कितना गाय? एक ना? हाँ सर बोलिए। स्वामी जी म्यूट कीजिए आप। स्वामी जी म्यूट कर लीजिए। Oh, I'm getting noise. I can't hear. Go ahead. So now this, for example, virus is microbiome. Now he mentioned that there are many grades of microbiome. Virus is the crude form for propagation of life. अब कितना गाय? एक की दो? Can you hear? I can't hear actually. Very noise coming. हाँ तो सोचना स्वामी जी म्यूट कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कितना गाय? एक और ठीक है इसके बाद स्वामी जी बात कर रहे हैं, म्यूट नहीं कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है। मैं नहीं था ना, आई वाज नॉट प्रेजेंट देयर। स्वामी जी म्यूट कीजिए। मैं बोल दूंगा अभी मैडम को, ठीक है? Hello. हाँ सर कीजिए। स्वामी जी म्यूट नहीं कर रहे हैं। कैसे आएगा? इसे कैसे सबमिट करने जाएंगे? Can I continue? डिफरेंट आईटी पोस्ट कर लेना। यस सर। So now he mentioned the microbiome of several types. The largest form is a virus. The whole job is the microbiome here is to propagate life across galaxy. In that context, he names it is a cosmic entity in the crude form. And then this entity could be much smaller than virus also. It's much smaller. For example, when the virus enters the body, for example, it has to contact the cells. We have 50 trillion cells. It has to enter through the cells. When it enters the cells, the virus becomes live again. So that means the microbiome means the small life form. So virus has a mind also, because the mind is not expressed because it never had a medium until now. So when you enter the body or the cell, so it becomes live again. It starts replicating, taking the host's machinery because it can't replicate itself, then start. And interestingly, its mind is so sensitive that it does not kill the individual completely, because it knows if it kills the individual completely, it cannot sustain anymore. That's why very cleverly, suppose our body has 100% energy, it uses only 10% energy of the system to replicate, to propagate, to infect, to give suffering to the individual, but it does not consume other 90% of the system, so that because he knows if it consumes all the 90% of the system, the person dies and the virus has become useless. It has to do its job. So it uses his mind, only use the 10% of his consumption of energy, so that it can only sustain for a certain time, depending on what actually required to do it. Now, when you enter the system, then your cellular mind obviously has to first meet the viral mind. We have 50 trillion cells, doesn't matter wherever it enters, and every cell has a little mind, and that mind is expressed because of a more sophisticated form of microbiome, much finer form. That means the whole idea of the microbiome is it brings expression of mind in a cell, it brings consciousness into a non-living. When microbiota enters from a cosmic particle, an entity, it enters a non-living, it becomes living, and consciousness becomes arousal. And in case of the living system, microbiota, it does the expression of the mind, because consciousness is the main headquarter, mind is a part of it, and intellect is another part of it. But we think, as a scientist, microbiome is actually the energy unit of consciousness. Consciousness in its own form is not manifested. But when the microbiome comes there, it actually uses an energy unit, low energy unit of the consciousness, so that it allows the expression of the mind, propagate the species, development of the mind, development of the intellect, developing the creative process, and ultimately developing into a spiritualist or searching for spiritual knowledge, so that it ultimately gets the confirmation, transformation, then merger.
So the microbiome of many kinds, a large kind, medium kind, small kind, invisible kind, depending whatever the need required. And they prefer to travel by inferences. They travel through smell, they travel through touch, they travel through thought, they travel through medium. These are the mediums. It cannot travel. For example, virus, I gave one example. It enters the cell, it travels through its own machine, it just by accident touches you. Then it propagates and it stays there. Now, according to him, virus is an example of negative microbiota. There are different kinds of microbiota. Large, medium, small, very small. It is sometimes so small, it is equivalent to an idea. It is so small, it is equivalent to some kind of non-existent almost. So, and he classifies these microbiomes also are two of kinds. One is negative and positive. And the whole system in the universe, or in a body, or in a cell, or in a disease model, or in a healthy model, is actually the balance of the universe. So microbiota brings the balance in the universe, in the mind of the individual, and in the galaxy, in the cosmos. So it's a cosmic entity, and the balance occurs because of its percentage of the negative versus positive. Now, if the individual, for example, is not a very healthy person, not of a healthy mind, so its body already in a negative state. So negative microbiota prefers to enter a negative environment, whereas first category. Second category, negative microbiota virus enters a body where the body is not a balanced body, negative positive internal microbiota. In that case, the virus cannot do anything. It stays suppressed, hidden, unexpressed for a long time there, like a herpes, for example. Once the virus gets into the system, it stays there, our own body or genome, as a part of our gene, it stays there. And because the body is balanced, the pH is balanced, the thought is balanced, positive microbiota, negative microbiota are in a balanced state. But when the body becomes weak because of other reason, external reason, then this virus becomes active. That's why whenever you are infected with a virus, any cold virus, herpes virus, encephalitis, COVID, SARS, flu virus, anything, they actually stay there forever because it waits until the immune system goes down. It can replicate and again get into negative mode. So the whole idea of negative microbiome fighting the positive microbiome not true. It is actually the negative microbiome increasing the concentration, making it unbalance the system. Whereas the positive microbiome, which a man collects according to code of conduct, ethics, food, style of living, devotion, and through this, he maintains a positive, negative, or more positive microbiome. In that case, you find the negative virus cannot do any harm to you. Recent data shows that COVID basically infecting the people who are non-vegetarian. One small data has come, and COVID does not affect the people who are vegetarian. That means when you are vegetarian, your body is alkaline, your mind is balanced, you don't believe in violence, you are a non-violent person, you don't want to kill animals to eat yourself, eat themselves. So in that case, your body is balanced. In that case, the virus is uncomfortable that I am negative, I'm looking for a negative environment, creating more destruction, killing its body, killing its neighbor, but this man looks like much more positive. So here I calm down and stay there forever until he becomes weak again. So this principle I mentioned, it happens every second, billionth of a second, in 50 trillion cells we have in our body. Wherever it enters, the virus stays there. Now, this category of balance is one of the main criteria of the microbiome. It does balance in the universe, balance in the cosmos, balance in the society, balance in the human body, balance in every cells, and balance in the mind, and balance, of course, when you achieve all this balance, this microbiome, when becomes more positive, and again, it will become to more liberation path, moksha path, with more compassion, more social service, and ultimately meeting the Lord. So this is the idea of the microbiome, where it actually is a particle of unknown origin. And one thing raised by P.R. Sarkar also, he gives a rider with the microbiome. He says, as humans, you cannot ask the origin of microbiome because this is not
possible for human to comprehend the microbiome, because we are a part of the cosmos. We are not the cosmos. The creator, when he creates a creative does not find the mind of the creator. So obviously, similarly, when the microatom is a cosmic particle, he never says anywhere that God created it. He said the cosmic entity, cosmic particle, a natural phenomenon. Whole idea of microatom is to propagate life, propagate virtue, propagate destruction, propagate negative quality, so that every individual has a chance to develop into a more man from Superman or a spiritual man, knowing how to balance its body with the proper microbiome that will automatically control the thought. So the relation between the, again, microbiome and the universe is always, because the microbiome, it creates life in the womb. It brings the, when the two cells to join, and with getting right ambience, right environment for the person who is looked for this womb from previous birth. And when the person become old or become disease, the microbiome, negative microbiome kills it and goes away from the body. So negative microbiome does many positive things, and positive microbiome never does in negative things. The positive microbiome only balances with the negative microbiome for sustenance and the growth and the upliftment of the any kind of creature in this universe. Now, evolution occurs through microbiome. Involution continues through microbiome. Evolution means when the nature plays game with different species to continue for every planet, every space, every galaxy, every livable planet. There actually nature plays games with different conditions, different trials to make a perfect person like humans today, Homo sapiens. But that was not the case in Jurassic Age, where the earth was completely roamed around by dinosaurs. And because they couldn't survive, because that was a wrong experiment, and that's why they again continued. Finished. So in that case, in that time, negative microbiome destroys the civilization, destroys the creature, and again the experiment starts. And now when this evolution is complete, then the second path starts the microbiome with a more subtle form of the microbiome, which does the involution. Involution means you grow inward, you grow your intuitive power, you control your mind, and then you become more creative. You know how to control the negative quality around you. You know how to control, how to resist a society which is full of negative microbiome. So in that case, involution and evolution, they're continuous process. Now, they both are actually happened through microbiome, through their positive and negative counterpart, through the only one protocol is balancing the system of the negative and positive, depending what the requirement of the time zone. So this is the two about microbiome, about the balance. Now, the second part of the microbiome is to helping in transformation, creating a society. Now, this society, for example, when the positive microbiota spreads in the society by individual effort, then there is a group effort. Through again, the man become a Neohumanist. And the person who used to hate a dog suddenly finds loving all animals, loving plant, protecting the plant. So that means my positive microbiome is spreading, not from your example, but general all over, so that all these groups, when the individual join with each other, so the balance of the society starts occurring, and the negative goes away, leaves the planet, creating destruction, and the positive spreads. And this is the way this balance, this continuous evolution, involution, and goes on forever. Now, ultimately, this out of two aspects, the positive and negative. So the neo-humanist will come out, then P.R. Sarkar predicts a new futuristic world where the science will be advanced, code of conduct will be supreme, and then there is the negative microbiome and the role of the unethical conduct will vanish. So the society will enter into age, he calls it a microbiota age. So microbiota age is reminiscent of our era system, where the Satyajug, Kaliyug, Dwapar, and Treta. But because he uses science and technology for microbiota specifically, he calls it a microbiota age. In microbiota age, so basically there will be virtue, highly developed scientific society,
communication will be telepathically, source of energy, completely new direction. They start getting new energy from the cell also, 50 trillion cells. And then important part is actually future medicine is actually self-healing. There won't be any medicine. All this system of medicine will vanish. Allopathic medicine will vanish. They don't cure the disease, they actually bring another disease. In that case, the future of the condition of the microvita age is actually spirituality propagation, and then new technology where to giving you an age where actually the everything in the subtle form, the crudity goes down and the subtle form comes out. And then when that means all the 5 conditions I mentioned, that he want to bring a change, and microvita is the cause of all change. Transformation comes after the change. Transformation is caused by subtlest microbiome. And then due to this microbiome balance, then there is a devotion comes in individual. When the devotion comes to the individual, he becomes compassionate. When he becomes compassionate, he loves his neighbor. And when he loves his neighbor, connection established, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, state to state, country to country, all over they connect. And in that case, they all become stronger. And then the fear goes away and they develop resistance against any residual form of negative microbiome. So this is a brief introduction I gave to the microbiome. Can you hear me now? Hello? Yeah, listening. So is that enough, or I'll continue because this no, time is short. Okay. So just conclude. But was it simpler? Yeah, okay. Simplest, sir, simplest. Very nice. So by reading all his books, I have classified that the whole idea of Pravatana Sarkar Aka Anandamurti is a very long-term goal. It is not a short-term goal. The long-term goal is basically a change in society, transformation of individuals so that they become spiritual, devoted, and then they serve the people, and then the connection. Then there is a connection in the society, the neo-humanistic, everybody become a neo-humanist, and the new age comes, the microvita age. Thank you. Arvind ji? Yes, Arvind ji? Arvind ji? Arvind ji? Arvind ji? मैडम का रह गया है थोड़ा, उसको कंप्लीट करने दीजिए. एक गाने गाएंगी और 5 मिनट 7 मिनट बोलेगी, तो उसका कंप्लीट हो जाएगा. अधूरा रह गया मैडम. मनीषा जी, हेलो. हाँ, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहे हैं. तो अपना प्रभात संगीत कंप्लीट करने के बाद 5-7 मिनट जो बोलना है बोल के कंक्लूड कीजिए. ओके. First of all, Chief Guest, Honorable Dr. Professor Gangadhar Panda, the Honorable Vice-Chancellor of Kolhan University. Guest of Honor, Dr. Professor Uttam Patiji of JNU, Swami Divyachethanandanji of Rava, Dr. Arvind Singh ji, the Head of Department of Philosophy of Rajasthan University, Dr. Sunita Sharma ji, HOD, Department of Sanskrit, Rajasthan University. I would like to extend my heartfelt thanks for inviting me here today. And my humble pranams to all the dignitaries present as resource persons, participants, followers or shishyas of Shrii Shrii Anandamurtiji's Anand Marg. As Swamiji mentioned, I would like to begin my talk with music. I would be presenting a song or a composition of Shrii Shrii Anandamurtijii, which is popularly known as Prabhat Sangeet. The song is based on Rag Bihar and is set to Adha Teen Tal.
Since it's in Bengali, I would like to briefly tell you what is it about. It is a request of Shrii Shrii Anandamurtijii, or poet, to the Almighty that oh Lord, do not forget me. The connection that we have established is like a garland. Please don't break that, or please don't break this connection. Please don't break that garland. Due to our connection, I feel happy, or I feel the Anand, be it day or night. Then since I am always happy in your when I am connected with you, please don't forgive me in the sunny days, or in other cloudy days. Whatever my situation is, please don't forget me. Please be there always with me and shower your blessings upon me. So the Bengali Prabhat Sangeet, তুমি যে বাঁচতে ভালো ভুলো না।
সাথে সাথে গেছি গীত সাথে সাথে জলাগাতে উল্কা পাতে জলাগাতে উল্কা পাতে শ্রী শ্রী শেষ বাসতে ভালো তুমি রে বাসতে ভালো তুমি রে বাসতে ভালো যে মালা রেখে দিয়েছি চিরনাম যে মালা রেখে দিয়েছি চিরনাম বাসতে ভালো তুমি রে বাসতে ভালো বাসতে ভালো বাসতে ভালো Since I have been also asked to talk about Prabhat Sangeet, I would be dwelling more around the musical part of it and not on the philosophical part of it, because I'm sure that there would be a lot of deliberation coming up on the theological or philosophical side of Anandamurtiji's works. So the song I presented was of Prabhat Sangeet, and Prabhat Sangeet is basically it's a stream of music from Bengal, and many of the compositions, or rather most of the compositions, are in Bengali. Bengal has very rich tradition, rich cultural tradition, and it has over a period of millennia, it has got very fine musical genres like Shama Giti, Nazrul Giti, Baul Beat, Baul Bhatiyali, or there is a Vishnupur Gharana of Drupad, and I'm sure all of you are aware of Ravindra Sangeet, the Nobel laureate. Gurudev Rabindranath Tagore was considered, or rather is even today considered, as a cultural ambassador of India, and his compositions and his music is known as Ravindra Sangeet. And Ravindra Sangeet has explored every corner of human emotion and has given it the best possible expression. And Prabhat Sangeet is considered to be a post-Tagorian music of Bengal. As you could, those who are somewhat conversant or familiar with Indian music could see that the composition that I sang was similar to a Chota Khayal of Hindustani music. So many of the songs of Prabhat Sangeet are based on raga. And why raga music is used by so many saints and philosophers? The reason being that the music, like poetry, has capacity to take you beyond the words. It gives you the story in the gist, in nutshell, and makes you ponder over it, and connects and it makes you connect your own story to the given gist, and thus makes it more appealing or more individualized message experience. As well as it being a performing art, it also gives you a shared experience as the other arts gives you. So it is a very powerful medium that has been used by many saints to propagate their teachings, their philosophies. And Shrii Shrii Anandamurtijii was the follower of this great tradition of India. He also propagated, or he professed his philosophy, his teachings through these songs of Prabhat Sangeet.
Prabhat Sangeet, the word has come from the name of Shrii Shrii Anandamurtijii. As we all know that his name was Prabhat Ranjan Sarkar, and that's why his songs, he himself named them as Prabhat Sangeet. And many Prabhat Ranjan Sarkar ji has composed almost songs, or Anandamurtijii has composed as many as 5,018 songs from 1982 to 1919. So you can see in such a short span of 8 years, he has composed as many as 5,018 songs. And the thematic content of his songs were Krishna Bhakti, Shiva Bhakti, the various stages and experiences of his meditation, Dhyan Dharana. The songs were, one of the song which I sang was also one of the stage of Dhyan Dharana. The songs of nature, the songs of marching, and we can find much thematic variance in his composition. He has composed songs, though as I mentioned, many of the songs are in Bengali. He has composed many songs in other languages also. To name few of them are English, Sanskrit, Hindi, Urdu, Maithili, Angika, and so on and so forth. His composition he has used the forms like Tappa, Baul, Thumri, Kirtan, Khayal, Ghazal, Qawwali for composing his songs. And he has not only that he has written the lyrics, but he has also set them to the tune, the beautiful, beautiful tunes. And all in all, I would say that Prabhat Sangeet is Prabhat Sangeet is a beautiful amalgamation of interplay of beautiful melodies, rhythm, rich literary content, and has ability to give the listener the supra aesthetic experience, and listeners shake off their depression or melancholy when they listen to these beautiful melodies, and they become Ananda. The melodies are Anandadayi. They give you beautiful experience, being a very rich melody, having melodic content. All in all, it is a dawn of new era in Indian music. I would like to conclude my speech in a short composition in Rag Bhairavi, which is in Hindi.
Thank you so much. Thank you. Now, I am requesting to our Honorable and Senior Professor Surendra Mohan Mishra ji. He should take chair and preside this session. And I think I have to deliver a lecture, but due to short of time, I am myself quitting this session because there are many scholars are there. So Mishra ji, please excuse me. And now I don't want to speak because short of time. So let Ramnath Jha speak on Anand Sutram, importance of Anand Sutram. स्वामी जी पहले तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस होगा ना? नहीं, ये तो सेशन का चेयर कर रहे हैं ना, ये तो बाद में करेंगे ना। अच्छा, तब ये कंटिन्यू कर रहा है सेशन? हाँ, सेशन कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है। शॉर्ट ऑफ टाइम वी आर नॉट गोइंग टू फॉर्मेलिटी नो। ठीक है। मिश्रा जी शुरू करूं मैं? हाँ, शुरू कीजिए। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यापि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी, हमारे मित्र प्रोफेसर उत्तम पति जी, प्रोफेसर पांडा जी और सभी डिग्निटरीज, सभी श्रोतागण, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रोफेसर उत्तम पति जी की बात को थोड़ा सा मैं ट्रेडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में परंपरा का देश है और यहाँ ज्ञान, व्यक्तिगत ज्ञान का महत्व कम है, ट्रेडिशन का ज्यादा है। हम उस ज्ञान की धारा में जीते हैं जो सदियों से चली आ रही है और समयानुसार हम उसको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको हम प्रस्तुत करते हैं और तत्कालीन समाज, व्यक्ति के कल्याण के लिए जो भी उपयोगी है उसको हम उस समय प्रस्तुत करते हैं। के लिए हमारे समाज में विभूति, जो ज्ञानी, तपस्वी, ऋषि, मुनि सब आते रहते हैं और समयानुसार उसको उस प्रसंग के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। मेरी दृष्टि में इस शताब्दी में गुरु आनंद मूर्ति जी वही विषय हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने आए थे और आज के समय में वो दार्शनिक हो, स्थिति हो या वैज्ञानिक हो या सामाजिक हो या आर्थिक हो, मनुष्य के लिए जो एक संपूर्ण चिंतन चाहिए उसको प्रस्तुत करने के लिए वो आविर्भूत हुए थे और अपने ज्ञान से उन्होंने सभी को एक नया मार्ग दिखाया है। तो इसी क्रम में जैसे कि प्रोफेसर उत्तम पति जी हमारे सामने जो माइक्रोवाइटा का कॉन्सेप्ट है उसको वैज्ञानिक और बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया, ऐसे प्रस्तुत किया कि कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से समझ सकता है। साइंस के दो ही लैंग्वेज होते हैं, एक लैंग्वेज तो प्योर साइंटिफिक लैंग्वेज होता है जो साइंटिस्ट ही उसको समझ सकता है, लेकिन उस साइंस के उस टेक्निकल लैंग्वेज को
जब कोई वैज्ञानिक आम लोगों की भाषा में प्रस्तुत कर देता है तो वही सुग्राह्य हो जाता है, फिर वो लोकोपयोगी हो जाता है। आइंस्टाइन की भी जो पॉपुलैरिटी थी उसका मूल कारण यही था। और जब उसको आइंस्टाइन को 1922 ईस्वी में जब नोबेल प्राइज दिया जा रहा था तो उस समय जो उस सेशन के चेयर थे, जो नोबेल प्राइज कमेटी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने यही बात कही थी वहां पे कि आइंस्टाइन जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं, उनसे बड़े भी हुए हैं, लेकिन आइंस्टाइन ही इतना क्यों पॉपुलर हुए? क्योंकि आइंस्टाइन ने जो विज्ञान की गूढ़ बातें थी उन बातों को आम लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दिया। आइंस्टाइन की पॉपुलैरिटी उतनी ही है जितनी कि बहुत बड़े बड़े संत ज्ञानियों की होती है। तो आज का जो प्रोफेसर उत्तम पति जी का व्याख्यान था वो उसी कैटेगरी का था कि जो बिल्कुल साइंटिफिक और टेक्निकल जो चीज है उसको उन्होंने इतनी सहजता से हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया कि मुझे जैसे लगता है विशेष रूप से कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में उसको इस तरह से प्रस्तुत किया कि सभी लोग समझ गए कि वायरस का क्या रोल है। वायरस का रोल नेगेटिव भी है, वायरस का रोल पॉजिटिव भी है। जैसा कि उन्होंने कहा कि वायरस नॉन लिविंग और लिविंग का एक अमालगमेशन है। वायरस जो है वो एक तरह से नेचर का प्ले है। मैं जितना समझ सकता हूं कि इट इज ए प्ले ऑफ नेचर। प्रकृति जब चाहती है कि कुछ सकारात्मक हो तो पॉजिटिव माइक्रोवेटा को एक्शन मोड में ले आती है, और जब कुछ नेगेटिव चाहती है तो फिर वैसे ही उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है। तो ये जो चीज है इसको हम यदि आनंद सूत्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्वामी जी बहुत अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं कि जो शिवस्य शक्ति है, जो शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म में जो शक्ति है वो शक्ति त्रिगुणात्मिका है। और त्रिगुणात्मिका शक्ति में जब सत्व गुण की प्रधानता होती है तो वो पॉजिटिविटी का रोल प्ले करता है, जिसको स्वामी जी बार बार कहते हैं। और आनंद मूर्ति की जो आनंद मार्ग की परंपरा में उसको विद्या माया कहते हैं। और रजस और तमस की जब प्रधानता होती है तो फिर वो अविद्या माया है। तो विद्या अविद्या का कॉन्सेप्ट हमारे ट्रेडिशन में बहुत प्राचीन है। विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह विद्या मृत्युम अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृत्युम अश्नुते। ये विद्या और अविद्या का जो कॉन्सेप्ट है, या दूसरे आप टर्मिनोलॉजी में कहें तो इंट्यूटिव नॉलेज वर्सेस रैशनल नॉलेज, या और दूसरे शब्दों में कहें तो जो हमें प्रतिसंचर की प्रक्रिया जो होती है उसका जो कारण है और संचर की जो प्रक्रिया होती है उसका जो कारण है। तो सब दृष्टि से हम देखें तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव ये तो एक इंटरप्ले है कि हम देख रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ भी है वो पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है। केवल पॉजिटिव रहने से संसार नहीं रह सकता, केवल नेगेटिव रहने से संसार नहीं रह सकता। सांख्य कारिका में जो सांख्य दर्शन है उसको बहुत बढ़िया से इसको प्रस्तुत किया है कि परस्पराविभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च, परस्पराविभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च, कि ये जो तीन गुणों का जो खेल है प्रकृति का, तीन गुणों का जो खेल है उसमें परस्पर एक दूसरे को डोमिनेट करता है, दोनों को शेल्टर भी देता है, एक दूसरे के साथ भी रहता है, और सब करते हुए फिर प्रोड्यूस भी करता है। अब ये प्रोड्यूस करते समय यदि सत्व प्रधान हो गया तो पॉजिटिव माइक्रोबाइटा हो जाएगा, यदि रजस और तमस प्रधान हो गया तो नेगेटिव माइक्रोबाइटा हो जाएगा।
आज हम वही देख रहे हैं। आप जैसे प्रोफेसर साहब ने, उत्तम पति जी ने कहा, बड़ा बढ़िया आज उन्होंने समझाया इस चीज को कि ये जो सारा है वो इंटरप्ले है, और हमारा विचार यदि सात्विक है, आज विज्ञान में ये बातें सिद्ध हो रही है। पहले बीच में जब मटेरियलिज्म हावी था तो इन चीजों का महत्व नहीं दिया जा रहा था। आज भी हम देख रहे हैं कि खान पान की दृष्टि से या आचार विचार की दृष्टि से हम आज का जो वेस्टर्न एजुकेशन में बहुत ज्यादा हम सचेत नहीं रहते, लेकिन उसका प्रभाव सूक्ष्म रूप से पड़ता है। ये प्रोफेसर उत्तम पति जी ने बहुत अच्छी तरह से रखा कि यदि आपका विचार सकारात्मक है तो आपके बॉडी का जो सेल सिस्टम है वो पॉजिटिवली एक्ट करता है, वो पावरफुल होता है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और यदि आपका नकारात्मक विचार है, यदि आचार विचार आपका नेगेटिव है, तो फिर आपका जो सेल सिस्टम है वो वीक होता है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग नहीं होता। और इस रूप में यदि नेगेटिव माइक्रोबायोटा यदि आपके बॉडी में यदि एंटर करता है तो फिर बहुत जल्दी आप सस्टेन नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि इस तरह से वो रोल प्ले करता है कि आपका थोड़ी थोड़ी एनर्जी लेगा, क्योंकि उसमें सेल तो होता नहीं, वायरस में तो कोई सेल नहीं होता, वो वायरस दूसरे सेल को बेस बना करके काम करता है। तो आपके सेल से, आपके बॉडी से वो एनर्जी लेता रहेगा और धीरे 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 आपको वो नेगेटिव जोन में ले आएगा। तो ये जो चीज है, इस चीज को आज लगता है कि माइक्रोबायोटा और आनंद सूत्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारा एक एक विचार, हमारा एक एक भोजन, एक एक दिन का हमारा जो एक यात्रा है कि हम कैसा भोजन करें। जैसे उन्होंने अभी कहा है कि जो एक साइंटिफिक जो आया है, जो असेसमेंट या एनालिसिस आया है कि वेजिटेरियन लोग जो हैं उनमें कम असर, वो कम नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वेजिटेरियन लोगों में जनरली पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा होती है, और जो नॉन वेजिटेरियन है उसको ज्यादा अटैक कर रहा है, उसमें वो ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। ये जो चीज है, इसको हमारी परंपरा में आरंभ से इस पर बहुत बल दिया गया है। भगवान कृष्ण गीता में, हम सभी जानते हैं कि गीता का जो एक अध्याय है, 17वां अध्याय, वो भोजन आचार विचार के लिए ही प्रसिद्ध है। और भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। उचित आहार और उचित विहार होना चाहिए, उचित सोना, उचित जागना होना चाहिए। ऐसा जब होता है तो फिर आपके अंदर का जो सेल सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। वायरस तो हमारे अंदर हमेशा आते ही रहते हैं, क्योंकि वो तो मिलियंस में आते हैं। वो तो कोई ऐसा नहीं कि एक बार हम सांस में, जैसे उन्होंने कहा कि उसका जो मीडियम है, वो मीडियम तो वही है जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। जो हमारा, हम किसी न किसी चीज को स्पर्श करेंगे, कभी न कभी सांस लेंगे, खाएंगे, ये सारी जो प्रोसेस है हमारे डे टू डे लाइफ की, इसके तो वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है, लेकिन एंटर करने के बाद उसको कैसा शेल्टर मिलता है और उसको आपके सेल से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, ये डिपेंड करता है कि आपका पॉजिटिव थॉट है या नेगेटिव थॉट है, या कैसा आपका भोजन है, कैसा आपका सुबह से रात तक का आपका पूरा आचार है। तो इसको हमारे यहाँ शुरू से विकसित किया गया। और हम सभी जानते हैं कि 50 वर्ष पहले भारत के घर घर में जो स्वच्छता होती थी, कोई व्यक्ति चप्पल जूता पहन के किचन में नहीं जा सकता था, घर के अंदर नहीं जा सकता था। आज वैज्ञानिक दृष्टि से आप सब, हम जूता खोलते हैं बाहर, लेकिन बीच में हम इतना अंधानुकरण करते हैं कि हम ये सारी चीजों को भूल जाते हैं। और जब हम पर वो नकारात्मक रूप से असर डालता है तभी हम फिर सचेत होते हैं। तो परंपरा का ज्ञान जो होता है, इट इज ऑलवेज टेस्टेड नॉलेज। जो टेस्टेड नॉलेज है उसको हम छोड़ करके यदि हम किस अंधानुकरण करते हैं तो उसका क्या असर होता है, अभी हम देख रहे हैं इसको। आज भी भारत में मृत्यु दर बहुत कम है। क्यों कम है? क्यों इसलिए कम है कि भारत का आचार विचार और से बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इस क्रम में जैसा कि प्रोफेसर
उत्तम पति जी ने कहा था, मैं थोड़ा ट्रेडिशन में आपको ले जाना चाहता हूं कि गुरु आनंद मूर्ति जी ने स्वयं इस चीज को लिखा है। वो हमेशा ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट देते हैं, वो हमेशा इस चीज को बताते हैं कि हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे ज्ञानियों ने इस तरह की व्यवस्था की है, और उस व्यवस्था को आज की दृष्टि से कैसे हमें प्रेजेंट करना है वो उसको लाते हैं। वो आनंद सूत्र में भी लाते हैं और माइक्रोबायोटा थियरी में भी लाते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा प्रोफेसर उत्तम पति जी ने, मैं एक आपको जस्ट उनका लाइन सुनाता हूं कि वो स्वयं कहते हैं कि in ancient times regarding the singular or collective structures of these microbiota, the ancient rishis sages said that they are of 7 types. अब देखिए, जैसे उन्होंने साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रोबायोटा को बता दिया, लेकिन आप जब ट्रेडिशन में देखेंगे तो वेद से लेकर और अभी तक हजारों हजार वर्षों से माइक्रोबायोटा के जो 2 रूप हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव माइक्रोबायोटा, इसके नाम पहले से हमारे यहाँ हैं और पहले से इसका विश्लेषण होता आ रहा है और पहले से हम इस पर विचार करते रहे। आज गुरु आनंद मूर्ति जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि वो एक साइंटिफिक मोड में उसको ले आए। आज साइंटिस्ट के लिए उन्होंने एक ऐसा हाइपोथेसिस दे दिया है कि जैसे प्रोफेसर उत्तम पति जी ने बताया, क्योंकि वो स्वयं ही इस पे एक्सपेरिमेंटल वे में काम कर रहे हैं और दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट कर रहे हैं। आने वाले 200 वर्षों के लिए उन्होंने साइंटिस्ट के लिए एक हाइपोथेसिस दे दिया है और दैट कैन बी एक्सपेरिमेंटेड इन लैब। यहां तक उन्होंने इस बात को कह दी है। तो ये चीज उनका एक ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको रखते हुए भी उन्होंने ट्रेडिशन को ध्यान में रखा है और ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि ऋषि ने इसका प्रॉपर नाम दिया हुआ है और जो नेगेटिव और पॉजिटिव माइक्रोबायोटा है उसका जो उन्होंने डिवीजन किया है, उसमें पॉजिटिव माइक्रोबायोटा के उन्होंने 7 नाम दिए हैं जो वेद से लेकर चला आ रहा है। मैंने अपने कोर्स वर्क में बच्चों से कम 10 टर्म पेपर लिखवाए हैं इस विषय में और मेरा एक है कि जो माइक्रोबायोटा पे, जैसे प्रोफेसर उत्तम पति जी साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे लगे हुए हैं, तो मैंने ये सोचा कि ट्रेडिशन में माइक्रोबायोटा या जो गुरु आनंद मूर्ति जी कह रहे हैं उसको ऋषि ने किस रूप में देखा है, पुराणों में कैसे देखा है, बाकी शास्त्रों में, आयुर्वेद में कैसे देखा है। तो आप ये आपको प्रसन्नता होगी कि उन्होंने जो 7 पॉजिटिव माइक्रोबायोटा के नाम दिए हैं उसमें है यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, सिद्ध, प्रकृतलीन और विदेहलीन। अब आप यक्ष, गंधर्व, किन्नर हम तो सब सुनते हैं, पूरे शास्त्र में ये चीज है। रामायण देखें, महाभारत देखें, पुराण देखें, वैदिक लिटरेचर देखें, लेकिन आप आश्चर्य की बात ये देखिए कि इन 7 का नाम उन्होंने कैसे पॉजिटिव माइक्रोबायोटा के रूप में यूज किया है, जिसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में प्रोफेसर उत्तम पति जी बोल रहे थे। इसी के साथ जो 7 नेगेटिव माइक्रोबायोटा है उसका नाम उन्होंने दिया है कि दुर्मुख, कबंध, मध्य कपाल, महाकपाल, ब्रह्म दैत्य और आकाश प्रेत और पिशाच। अब ये पिशाच, दैत्य, ये सब नाम जो हम सुनते आ रहे हैं उनको इन्होंने इस तरह से साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में इसको प्रस्तुत किया है कि ये 14 जो नाम है, ये 14 नाम वस्तुतः 7 पॉजिटिव माइक्रोबायोटा है, 7 नेगेटिव माइक्रोबायोटा है। और जैसा कि अभी प्रोफेसर उत्तम पति जी कह रहे थे कि जब वो कलेक्टिव रूप में काम करता है, एक तो इंडिविजुअल रूप में जैसे अभी वायरस का क्रम चल रहा है तो अभी हम इसको ठीक से समझ ली, लेकिन जब वो कलेक्टिव रूप में काम करता है तो वो एक थॉट प्रोसेस होता है। जैसे अपने यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ तो एक स्वतंत्रता मिले हमारे देश को, इसमें जो करोड़ों लोग इन्वॉल्व हो गए तो सबका मन एक जैसा हो गया कि नहीं हमें स्वतंत्रता मिले। तो ये जो सबका मन एक जैसा अचानक हो जाना, ये कलेक्टिव पॉजिटिव माइक्रोबायोटा का रोल है। या जैसे जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट हुआ तो एक कलेक्टिव एक मेंटल प्रोसेस शुरू हो गया
तो गुरु आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि वस्तुतः जब माइक्रोबायोटा कलेक्टिवली जब वो आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करता है तो फिर आपके मन में विचार ही बदल जाते हैं। आप अचानक, जैसे उन्होंने कहा कि जो आदमी संगीत से घृणा करता है, यदि उसके अंदर यदि गंधर्व नाम का पॉजिटिव माइक्रोबायोटा एंटर कर जाए तो अचानक उसके मन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा कि नहीं, अब संगीत तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो व्यक्ति एक काम से कल तक वो बिल्कुल वो उसको नहीं लाइक करता था, वो जैसे इस माइक्रोबायोटा का प्रभाव पड़ता है तो अचानक उसको उन चीजों में अभिरुचि जग जाती है। तो इसको बड़ा एक फ्यूचरिस्टिक प्लान के तहत उन्होंने इसको कहा है कि यदि इस पे एक्सपेरिमेंट किया जाए, इस माइक्रोबायोटा को, जैसे अभी आप परमाणु से बिजली बनाने लगे, वो जो यूनिट है एनर्जी का और यूनिट है वो बड़ा कॉन्शियस यूनिट है। उस कॉन्शियस यूनिट को यदि आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू यदि आप उसको एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी के रूप में ले आए तो आप हो सकता पॉजिटिव माइक्रोबायोटा का प्रयोग करें, आप इंजेक्शन लगा सकते हैं, आप वो ऐसा वेव क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से सोसाइटी को चेंज किया जा सकता है। आप कोई बहुत नेगेटिव है, कोई आतंकवादी है, उसको पॉजिटिव माइक्रोबायोटा से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो इस तरह का जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है, उस प्लान को उन्होंने हमारे समक्ष रखा है, जिसके लिए प्रोफेसर उत्तम पति जी कटिबद्ध हैं और ऐसे ऐसे उनके पूरे ग्रुप हैं साइंटिस्ट के जो लगे हुए हैं कि आने वाले समय में इसका हम कैसे एक जो पॉजिटिव रोल इस्टेब्लिश कर सकें। तो मेरा इस क्रम में ये बताना था कि जो अपने यहाँ जो ट्रेडिशन में जो इसका चिंतन होता आ रहा है और उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा, उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में लाया और उसी को लेकर के वैज्ञानिकों के सामने एक हाइपोथेसिस के रूप में रख दिया है और आज सैकड़ों वैज्ञानिक उस काम में लगे हुए हैं। अपने यहाँ क्या समस्या हुई कि जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद में 16 विभाग है, उसमें एक है भूत विद्या। अब जो भूत विद्या का असली जो अर्थ है वो तो डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री है, भूत विद्या है। अब भूत विद्या में आप चरक संहिता देखें या दूसरे आयुर्वेद के ग्रंथ देखें तो उसमें इन्हीं शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। कहीं आप देखेंगे जो गंधर्व है, कहीं किन्नर है, कहीं यक्ष है। अब इसके थ्रू उन्होंने आपकी जो मानसिक दशा है उस मानसिक दशा का उपचार करने के लिए उन्होंने इन शब्दावलियों का प्रयोग किया है। तो इसको ठीक से हम आगे नहीं बढ़ा पाए या जो भी एक परिस्थिति जन समस्या आई या जो अंग्रेज लोग थे वो आयुर्वेद को थोड़ा सप्रेस करना चाहते थे सॉरी, और एलोपैथी को आगे बढ़ाना चाहते थे। हमने कई रिसर्च करवाए हैं, इसमें सीधे कई जगह ये प्रसंग आया है कि इंटेंशनली आयुर्वेद को सप्रेस किया गया उस समय और एलोपैथी को आगे बढ़ाया गया। तो इस क्रम में जो भूत विद्या हमारे यहाँ था वो थोड़ा सा नीचे चला गया और एलोपैथी जो है उस एरिया में आगे बढ़ गया। लेकिन चरक संहिता और आयुर्वेद के अन्य ग्रंथों में जो उपचार मानसिक जो चिकित्सा है, मानसिक चिकित्सा के लिए जिस तरह का उपचार है या जिस तरह के सिद्धांत का विधान है उसमें ये सारे जो जिसको गुरु आनंद मूर्ति जी हमारे समक्ष जिस टर्मिनोलॉजी को रखते हैं उस टर्मिनोलॉजी का वहां प्रयोग हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब कहीं आवश्यकता हो तो उसका भी हमें उपयोग करना चाहिए। तो मैं युवा वर्ग भी बहुत यहाँ है सब, तो आपके लिए ये सब चुनौती है कि आने वाले समय में आप ऐसे विषय को उठाएं। देखिए इतना 18 पुराण है, इतना बड़ा लिटरेचर है, सब जगह आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी मिलेगी। लेकिन आप जब माइक्रोबायोटा का टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको, मैं तो पहली बार रोमांचित हो गया कि जो हम सुनते आ रहे हैं, जो पता ही नहीं चल रहा था कि ये यक्ष क्या चीज है, किन्नर क्या चीज है। हम पढ़ते सब थे, सुनते सब थे, युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद हुआ, वो यक्ष है क्या चीज। अब हम तो संवाद सुन लेते हैं, महाभारत में भी सुन लेते हैं, लेकिन यक्ष है क्या चीज। तो अब जब ये जो माइक्रोबायोटा की बुक हमने पढ़ी, लगा कि ये तो अनफोल्ड किया है पूरे ट्रेडिशन के रहस्य को।
तो ये उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इसी को वो आनंद सूत्रम में बहुत सूक्ष्मता से इसी बात को वो जैसे संचर और प्रतिसंचर है, बाद में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे सृष्टि होती है। और जब उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि जहां भी आप अप्रोक्सीमेटी में रहेंगे, जो एक साइंस का एक जो बड़ा एक डिबेट है आज के समय में कि कैन साइंस प्रोवाइड अप्रोक्सीमेट नॉलेज और कम एब्सोल्यूट नॉलेज, कैन साइंस प्रोवाइड अप्रोक्सीमेट नॉलेज और एब्सोल्यूट नॉलेज, ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। और फाइनली जो कंक्लूजन है उसमें यही है अभी तक कि साइंस कैन प्रोवाइड ओनली अप्रोक्सीमेट नॉलेज बिकॉज थ्रू इंस्ट्रूमेंट any knowledge can be approximate, not absolute. Then what is the mode, what is the means to acquire absolute knowledge or to realize absolute knowledge? ये एक बहुत बड़ा इशू है। और ये जो हम देखते हैं कि जो हम एक यूनिट के रूप में है, ये जो गुरु आनंद मूर्ति जी जोड़ते हैं कि जो एक इंद्रियजन्य ज्ञान है, इंद्रियजन्य सुख है, और वह सुख जो है हमें थोड़े समय के लिए प्राप्त होता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमें अनंत सुख मिले। एक बहुत अच्छी कहानी है 7वें अध्याय छांदोग्य उपनिषद की, जो नारद हैं वो पहुंचते हैं सनत कुमार के पास। वो बहुत परेशान रहते हैं, वो तनाव में रहते हैं। तो जब सनत कुमार देखते हैं नारद जी को इतने परेशान हैं, तो वो कहते हैं क्यों आए हैं यहाँ? तो बोले मैं बहुत तनाव में हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे शांति मिले, मुझे पूर्ण सुख प्राप्त हो। तो सनत कुमार बोले आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी होकर इतना क्यों तनाव आप में? तो आपने अभी तक क्या क्या अध्ययन किया है? और आपको आश्चर्य होगा कि वहां जब आप देखेंगे तो उन्होंने 19 विद्या का उल्लेख किया है, और 19 विद्या में आपद विद्या भी है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, जितनी विद्याएं हैं वो सबका नाम है वहां पे। और नारद जी कहते हैं कि मैंने इतना स्टडी किया है फिर भी मैं तनाव में हूं। तो अंत में सनत कुमार का फिर वहां कंक्लूजन है कि ये जितने सिस्टम है नॉलेज के, ये सारे सिस्टम जो है फाइनली दैट लीड यू टू द स्टेट ऑफ अप्रोक्सीमेट नॉलेज, नॉट एब्सोल्यूट नॉलेज। एब्सोल्यूट नॉलेज के लिए जो मेथड अपनाया गया है, वो मेथड जो है वो विद्या है, जो विद्या माया जिसको यहाँ पे आनंद मार्ग में कहते हैं। और वो विद्या माया जो है वस्तुतः सात्विक ज्ञान है। वो पॉजिटिव माइक्रोबायोटा धीरे धीरे आपके मन को उस एकत्व की तरफ बढ़ाना शुरू करता है। उस एकत्व को बढ़ाने के क्रम में उसको आपको गुरु तक पहुंचा देता है, और गुरु तक पहुंचाते हुए आपको गुरु इस तरह का मार्ग आपके सामने रखते हैं और आपको गाइड करते हैं कि धीरे धीरे आप उस अप्रोक्सीमेट स्टेट से एब्सोल्यूट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। और इसी को यहाँ पे प्रतिसंचर कहते हैं कि फिर आप एक इंडिविजुअल से धीरे धीरे उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ते हैं। और वो बढ़ते जब आप उस अल्टीमेट स्टेट को रियलाइज करते हैं, तो आपका जो सीमित सुख है वह असीमित हो जाता है, तो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म हो जाता है। और आपका जो चिंतन है, जिसमें कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें मिली हुई है, जैसे कि हम शास्त्र में देखते हैं कि मनुष्य का जो स्वरूप बताया है शास्त्र में, वो दोनों का एक मिक्सचर बताया है कि जहां शुक्ल कृष्ण दोनों का मिक्सचर होता है, वो मनुष्य को बताया है। इसीलिए हम सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, लेकिन मनुष्य में ये पोटेंशियल है कि ऐसे शास्त्र और गुरु के सानिध्य से वो धीरे धीरे अपनी पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाता जाए। और बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा कि वह अपने उस एब्सोल्यूट स्टेट को रियलाइज करे। और एब्सोल्यूट स्टेट को रियलाइज करने के लिए जो योग का साधन है, जो साधना का मार्ग है, वो साधना का मार्ग ही आपको एब्सोल्यूट नॉलेज तक पहुंचा सकता है।
वर्नर हाइजेनबर्ग बार बार इस चीज का उल्लेख करते हैं कि when I try to know something about nature, when I try to know something about nature, it seems that nature is asking question. Nature asking question that is your scientific mode or whatever reductionism is appropriate for acquiring absolute knowledge. So this is a question mark from nature. It seems, हाइजेनबर्ग बार बार कहते हैं। तो वैज्ञानिक भी उस यात्रा में लगे हुए हैं कि जो हम मेथड अपना रहे हैं, क्या वो मेथड जो है वो एब्सोल्यूट नॉलेज की तरफ ले जा सकता है या अप्रोक्सीमेट नॉलेज ही दे सकता है। तो उस एब्सोल्यूट नॉलेज के लिए जो मोड बदलने की बात है या और जो रिफाइंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी या मेथड को अपनाने की बात है, वो रिफाइंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और मेथड क्या चीज है। तो इस क्रम में फिर वो भारतीय ज्ञान परंपरा या ऐसे गुरुओं का मेथड जो है वही हमारे समक्ष आता है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, वैज्ञानिक प्रश्न हैं, जिस वैज्ञानिक प्रश्न में एक प्रश्न ये है कि हम अप्रोक्सीमेट नॉलेज से एब्सोल्यूट नॉलेज के स्टेट में कैसे पहुंचे, तो वो गुरु के माध्यम से पहुंचे। फंडामेंटल ट्रुथ क्या है? फंडामेंटल ट्रुथ क्या है? अभी भी आप देखेंगे तो न्यूटोनियन साइंस का फंडामेंटल जो है वो एटम्स है। क्वांटम फिजिक्स जब आया है तो फंडामेंटल जो है वो सब पार्टिकल गया और सब पार्टिकल से होते होते एनर्जी तक पहुंचा है। लेकिन क्या ये एनर्जी मैटर है या एनर्जी कॉन्शियस है? ये एक बड़ा प्रश्न साइंटिस्ट के सामने है कि एनर्जी इज मैटर और कॉन्शियस। तो इसमें जब आप शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म पढ़ते हैं तो ये क्लियर पोजीशन इनका है कि जो एनर्जी इज कॉन्शियस बिकॉज जो देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ द सेम रियलिटी एज ब्रह्म एंड शक्ति, शिव एंड शक्ति। तो ये मैटर नहीं है। जैसे आप रूपर्ट शेल्ड्रेक का पढ़ेंगे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में वो कहते हैं कि I believe in singular truth, I believe in singular reality, but that singular reality is material non-dualism, materialistic non-dualism। हम उस जड़ तत्व को, एक जड़ तत्व को मूल कारण मानते हैं जो शक्ति है, लेकिन वो शक्ति जड़ है, वो चेतन नहीं है। तो ये एक क्लियर पोजीशन है एक साइंटिस्ट के लिए। दूसरा हाइपोथेसिस है कि जैसे प्रोफेसर उत्तम पति जी भी हमेशा कोट करते रहते हैं कि मैक्स प्लैंक भी कहते थे कि जो it is consciousness that is fundamental, it is consciousness that is fundamental। तो कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है और वो कॉन्शियसनेस का ही एक एस्पेक्ट है जो शक्ति है, जो शक्ति इस प्लुरलिस्टिक रियलिटी का जो है मटेरियल कॉज है। तो इस तरह से कि फंडामेंटल कारण क्या है, तो एटम से सब पार्टिकल पे आया, सब पार्टिकल से एनर्जी पे आया। अब एनर्जी जो है उसका सबस्ट्रेटम क्या है, एनर्जी का क्या मूल स्वरूप है। तो इस विषय में यहाँ जो शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म है वो वैज्ञानिक एक दूसरा हाइपोथेसिस है, जैसा कि कुछ वैज्ञानिक बोलते भी हैं। इरविन सोडेंजर भी कहते हैं कि इट इज कॉन्शियसनेस दैट इज फंडामेंटल एंड कॉन्शियसनेस डजंट नो प्लुरलिटी, इट इज ऑलवेज सिंगुलर। तो ये जो आइंस्टाइन भी कभी कभी कहते हैं कि द अल्टीमेट ट्रूथ इज सम मिस्टीरियस प्लेयर, वो साइंस की टर्मिनोलॉजी में नहीं कहते लेकिन और बातचीत के क्रम में कहते हैं। तो फंडामेंटल ट्रूथ क्या है उसके विषय में भी आनंद सूत्र जो है वो अनफोल्ड करता है इस चीज को और एक पोजीशन लेता है कि ये जो है वह निश्चित सत्य है, जो गुरु के द्वारा अनुभूत है, जो परंपरा से सिद्ध है, जो टेस्टेड है। तो भारत का की जो पहचान है, जिसको हम कहते हैं कि भारत अध्यात्म का देश है और भारत विश्व गुरु है। भारत विश्व गुरु किस रूप में है? भारत विश्व गुरु इसी रूप में है कि कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि विद्या नाम अध्यात्म विद्या, मैं विद्या में अध्यात्म विद्या हूं। क्यों विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म विद्या है? क्योंकि अध्यात्म विद्या इस सृष्टि के मूल तत्व को बताता है। यह अध्यात्म विद्या इस सृष्टि के उस फंडामेंटल ट्रुथ को बताता है जिससे सृष्टि इवॉल्व हुआ है, जिसमें सृष्टि सस्टेन करता है, जिसमें सृष्टि डिसॉल्व हो जाता है।
तो इस तरह का जो पोजीशन है भारत का, वो भारत को विश्व गुरु बनाता है। और जो बाकी मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट है वो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट विद इन क्रिएशन है। लेकिन जो क्रिएशन का बेस है, वो बेस क्या चीज है, इसमें आनंद सूत्र जो है एक बड़ा साइंटिफिक पोजीशन है और इसको हमें देखना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत बोलना ठीक नहीं है, एक अप्रोक्सीमेट, एक एब्सोल्यूट नॉलेज का बड़ा एक पॉइंट, और यदि 2 मिनट में मुझे आदेश मिले तो मैं बोल सकता हूँ। सॉरी रामनाथ जी, हाँ काफी वक्ता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा जल्दी कंक्लूड करना है। बात कर रहे हैं, ठीक है। बस 2 मिनट और ले लेता हूँ, बस इसके बाद में कंक्लूड कर लेता हूँ। कंक्लूड का मतलब वही कंक्लूजन है। तो एक जो इशू है बहुत इम्पोर्टेंट कि होल रन्स पार्ट और होल इज रन बाय पार्ट। ये एक बहुत बड़ा है कि जब आप एटम को फंडामेंटल मानते हैं तो एटम, टाइम, स्पेस इत्यादि को मिला करके दैट इज इक्वल टू होल। सो होल इज द सम टोटल ऑफ इट्स पार्ट, ये जो एक इक्वेशन है। और दूसरा है कि होल इज मोर देन द सम टोटल ऑफ इट्स पार्ट, कि होल जो है वो पार्ट से के जो टोटल से अधिक है। भारत का जो पोजीशन रहा है वो थ्रू आउट रहा है कि होल इज मोर देन द सम टोटल ऑफ इट्स पार्ट। और ये शुरू होता है जो पुरुष सूक्त है कि पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिव्य, कि उस अल्टीमेट ट्रुथ के एक पाद में पूरी सृष्टि है, बाकी 3 पाद दिव्य है। आप इसमें आनंद सूत्र में देखें कि आत्मनि सत्ता संस्थिति, द होल क्रिएशन इज विद इन कॉन्शियसनेस, नॉट आउटसाइड कॉन्शियसनेस। ये जो है ना, और जो भी ट्रुथ है जब विद इन कॉन्शियसनेस है, आत्मनि सत्ता संस्थिति, ब्रह्म के अंदर ही सृष्टि होती है। और ब्रह्म के अंदर जब सृष्टि होती है तो ब्रह्म के द्वारा ही वो नियंत्रित होती है। तो कॉन्शियसनेस और होल इज नॉट रन बाय पार्ट्स, रादर पार्ट्स आर रन बाय होल। ये जो एक साइंस का बड़ा एक डिबेट वाला इशू है, उसको यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरह से एड्रेस कर सकते हैं। स्वामी जी का आदेश हो चुका है और मैं आज प्रोफेसर उत्तम पति जी के फुटनोट के रूप में बोल रहा था। तो सर मुझे क्षमा करें, मैंने थोड़ा इसी को शास्त्रीय मोड में ले आया। तो आपको बहुत बहुत सबको धन्यवाद। स्वामी जी मुझ पे इतनी कृपा करते हैं कि मुझे सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज कोरोना वायरस के टाइम में जो प्रोफेसर उत्तम पति जी ने इसको जो माइक्रोबायोटा को लाया, उसमें एक भारतीय जो दृष्टि थी उसको मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और साइंस के 1-2 और प्रिंसिपल जो डिबेट है जिसका 21st सेंचुरी में 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में, उसको मैंने लाने का प्रयास किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रोफेसर उत्तम पति जी, प्रोफेसर शर्मा जी, प्रोफेसर अरविंद जी, सभी को मेरा प्रणाम और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। अरविंद जी अभी हमारे सीनियर प्रोफेसर है, काफी देर से वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग अरविंद जी इसको अनिल प्रताप गिरी को देंगे। क्योंकि मैं क्विट कर गया हूँ, इसीलिए मुझे बोलना था और काफी लोग हैं, वक्ता काफी हैं, मुझे क्विट करना पड़ा। तो अभी हमारे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर के प्रोफेसर रमाकांत महालिक जी हैं, ज्वाइन तो किए थे। रमाकांत महालिक जी, महालिक जी, नमस्ते 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 नमस्ते। ओके, सो आई एम गिविंग यू प्रायोरिटी बिकॉज यू आर वेरी बिजी मैन, आई नो। No, that is not. So at the outset, one second. अरविंद जी, इसके बाद जरा आप अनिल प्रताप गिरी को दे देंगे। हाँ, अनिल प्रताप गिरी अंडरलाइन कर लीजिए, अनिल प्रताप गिरी। मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, मैं नहीं देख पाऊँ, ठीक है ना? ओके, गो हेड। So at the outset, I pay respect to all the dignitaries. I was listening since 2 hours. Maybe the discourse, the kind of discussion, it was very interesting
and realistic. Professor Pati has given a brilliant idea, and he simplified the concept of virus that the entire world is struggling to tackle or control. At the same time, Professor Ramnath Jha, it seems a very erudite scholar of Neohumanism. It's a very good idea. Really, I enjoyed it, and I hope all the delegates and all the listeners they have gained real knowledge that is required for the day. But my focus will be, I am a man of education. I teach in the subject education to the teachers, to the teacher educators, even university professor, assistant professors. So I'll be focusing on the contribution of PR Sarkarji for education, basically for the school education. And I will start with what is wrong in our education or the present education system, and how the idea, the philosophy, the thinking of PR Sarkar can transform our education system. And finally, at the end, I'll briefly highlight the National Education Policy 2020. And when I scan through the principles of Neohumanism, I found many points are reflected in our new education policy. So 3 points I will be covering. The first point is, education is age old as our civilization. Education was there during our early stage of human life. It was in Vedic stage. It was in post-Vedic stage. It was in Islamic stage. It was in British period. And now in modern period. Because education is something that is integral part of human civilization and human life. We cannot separate education from our society, from our life. And on the other hand, education is the only instrument that can bring change in the individual. It can bring change. It can bring national development also. When I say to bring change in the individual, it may be kind of formal education. It may be kind of non-formal education. Swamiji, Amritanandaji basically initially provided a non-formal kind of education. The later part only, he started some of the schools. There are many schools are there nowadays across the globe. Then Anand Marg School, where the philosophy of Neohumanism, the philosophy of PR Sarkarji has been implemented, and it has produced a fruitful result. So in that way, so what is real education? The concept is what is real education, or what should be real education, what should be real learning, what should be the purpose of education, what should be the content of education, the syllabi, the curriculum, and what kind of teacher. So when I talk about education means, I talk about all these things. Maybe it's content, it may be the role of the teacher, it may be the role of the student, maybe the type of institution we want, school, college, university. But before I come into the principles of education that is propagated by Amritanandaji or Neohumanism, I'll talk about briefly the
the present ills of education. What is wrong in our present education system? So there are many ills what I have suggested. One of the serious defects of our present education system, that is one-sided. Our education system has been one-sided. It was giving focus on only the mental development. So I'm talking about education system after independence. So mental development, the cognitive development was only one focus of education, our school education, our college education. Then education was fragmented. You are student of science, that means you cannot study philosophy, you cannot study music, you cannot pursue some other kind of art or science, language. So education was fragmented, very narrowly conceived. The main purpose of education was materialistic. The another problem of existing system is it was materialistic education. So everybody, even a student is going to school, going to college, gaining, not for gaining knowledge, but for getting some materialistic benefits. To get a job is the, maybe the purpose of education for a student, for a teacher, for a parent. Our education, the present education system is teaching something competitive. They want to make every individual, every student as a competitor. So we are always in the race. One student is competing with another student. One school is competing with another school. One teacher is competing with another. So everywhere there is a competition. But the aim of life is something different. It is not a competition. So competition creates many negative energy. This is simply when we compete, we are making wastage of our energy and time. The present education was giving emphasis on something foreign. In India, mostly we love everything foreign. We want to have a foreign degree. We want to work in the foreign country. So everything was foreign. Even, we are interested in foreign language. We are interested in the foreign subjects. One of the great, the defects of existing education system was lack of spirituality, ethics and morality. If we scan the education system, the school system, the college system, the university system, will find, there is no point where, there is no scope where the spirituality can be perpetuated, can be inculcated. We are not teaching morality. Maybe the person, those who are teaching philosophy, they may be teaching about the ethics and philosophy, but what about other subjects? So there is a less scope to teach ethics, morality. Our education is based on examination. So the purpose of education is something different. The real purpose is to become a good human being, to become a good citizen, to liberate yourself. But the existing education system focusing on examination. The teacher teaches for examination, students learn for examination. After examination, we forget everything. Then what is the meaning of education here is? Not only that, our education, as I said, it is based on the job markets. Whenever we discuss about education, even from the school, we think about, if I study this subject, what job I will get it? How much salary I will get it? What will be my earning? So our education is something job oriented. It's a market oriented. Lack of local. We don't, teach our students the local knowledge.
the indigenous knowledge. The very recently we are talking about indigenous knowledge in science, in social science, in mathematics, everywhere. But our country has greatly neglected the local knowledge, the indigenous knowledge. The lack of service mentality. Nowhere in the education system we teach about service. We want, best education, get a service, then you enjoy your life. This has been the motto of education of a student, of a teacher, of a parent. So nobody is teaching our students the service mentality. When you are educated, and after educated, you should serve the humanity, you should serve your country, you should serve your maybe community. So that is something missing in our existing education system. We don't have social consciousness, justice, very little. At this modern age also, we differentiate between boys and girls. We differentiate among SC, ST, general, OBC. There are so many kind of differentiations are there. So our education is something that is creating inequality. Many ways inequality. The rich people, they're sending the child to a sophisticated school, the best kind of facility available. But a poor parent, they send to the government school. So therefore, our education is something that is creating, it is something dividing the society, the haves and have not, and the gap has been widened now. Low environmental consciousness. Very recently, after the Supreme Court judgment only, now we are trying to teach our students, even in university education, higher education, the environmental education. But it was not there before that. We want to enjoy, we want to consume, we want to use whatever natural resources is available in our locality. One of the very important point, the defect of present education system is we are considering teaching as a job, as a teacher, every teacher. I think most of the teachers, they feel teaching is a job, but in fact, teaching should be a service. If you look to the traditional education system of the country, like during Vedic period, even post-Vedic period, the teaching was not a job; it was a service. So that is something missing in our education system. If this is the kind of education system, there are many great thinkers, many philosophers, those who propagated that idea to reform the education, to reform the society. So one among them is the PR Sarkar. So who has given a idea or philosophy, the principles on different aspects. But one of the aspects I will be speaking on is Neohumanism and its applications for education. So what kind of education Amritanandaji has been thinking? And it was implemented in the Anand Marg school across the globe. So what kind of education? So education, what they mean by education? Education, they mean education is something that liberates a child. So these are some of the principles. I'll be speaking. There are 10 principles I have taken from different literature I have gone through, different schools, websites. The 10 principles I will be explaining that is based on the new humanistic education propagated by PR Sarkar. This is something one can understand what should be kind of education, what should be the content, what should be the role of the teacher, or what kind of a school we should have. The number one, the first point it was suggested. The first point is to awaken the thirst of knowledge. So the role of education, the role of a school, the role of teachers should be to create a motivation among the child
to learn. It's a kind of thirst, a kind of self-motivation, because every child has an innate desire to learn and develop. Everybody. So I cannot say that particular child can learn or that particular child cannot learn. So we cannot make such kind of difference. According to New Humanism, every child has a potential to learn and develop, to learn and grow. And therefore, what should be the role of education? What should be the role of the school? The role of the school should be to role of the school is to to create a motivation, a internal urge to learn, to acquire knowledge. Here knowledge scope is something different. It's not only cognitive knowledge. The three kinds of knowledge are suggested by initially the Professor Panda, the Honorable Vice-Chancellor, the three kinds of knowledge, the transport to all the three kinds of knowledge must be developed when we are talking about education. And New Humanism was focusing on ethical based education. Education should be ethically based. I think this is something very, very relevant at present time. Of course, we have good students, those who can secure 100 out of 100. We have many students also. We have very good doctors, we have very good engineers nowadays. But we don't have good human beings. I think that is the ultimate aim of any education or any society. So what is lacking? The lacking is ethical point of view from or ethical based education. We don't have scope to teach ethics in our school education. We teach physics, we teach math, physics, science, language, but what is ethics? The ethical quality must be integrated with the existing school education. I think that has been done in the Anand Marg school. The point like non-harming, the truthfulness, non-stealing, universal law, simple living, helpfulness, meditation. I think these are something practiced in the Anand Marg school and the prescribed by P.R. Sarkarji. So present education, what I want to say, like all our education system, all our school should focus on ethics, development of ethical power of the child from the very beginning. So another point is awakening the spiritual, one of the very essential component of P.R. Sarkar's philosophy of education is to develop the spiritual awareness. Spirituality, the heart of Indian tradition. Even during our Gurukul system, during our Vedic system, the education or the purpose of education was spiritual development, to create a spiritual awareness. The spiritual development is not religious development. In India, we hate the word religion because we are secular. But the spiritual awareness, I mean here, the care for all creations. Very simple way P.R. Sarkarji explained what is spiritual awareness. The spiritual awareness is care for all creations. I should care for human being. I should also care for non-human beings. So this is something we should teach to our child through our school, through our teachers, through our educational institution. Another new way that New Humanism suggested, our learning should be integrated. I was telling, one of the ills of present education system was it is fragmented. But New Humanism suggested that our education should be integrated. We should follow integrated approach to learning, and which is multidisciplinary. Let the child learn, everything. Even in a primary school, the way we are teaching, there's one book which is teaching language, the same book is also teaching mathematics. Can you think for a integrated approach to teaching? We should not give emphasis on memorizing.
Rather, we should give focus on the process of learning something. We should give emphasis on collaboration. I was telling the competition, but Neohumanism suggests for collaboration. Collaboration is the quality something should be developed among the child from the early age. The child should be given freedom to choose the subject he or she like to learn from the school. So all are integrated approach. And then I will connect to the national education policy recently suggested. All the points suggested by national, national education policy are this. National education policy is talking about multidisciplinary education. Is focusing on freedom, child-centric education, freedom to each and every child to choose their subject, decide their subject. And another very good idea that national, Neohumanism suggested, cultivation of aesthetics in all disciplines, to aesthetic development of child in all disciplines. Our education system was giving focus on cognitive development. Everybody, parent, teacher, everybody interested in cognitive development. Everybody is asking about how much marks you secured. What is your grade? What is your division? Very rarely the parent, the teacher, they appreciate your art, your music. So your aesthetic quality is being neglected in our society, in our education system. We always, appreciate, we always give credit to the student, to the child, those who are good in academics. But Neohumanism suggested, no. They want a holistic development of each and every child, holistic development of the child. Not only cognitive development, also aesthetic development. Each and every child should able to appreciate the art form, the Indian art forms, the Indian musics, the literature, the environment. So the next point that I want to tell you, the local and multicultural education. Neohumanism suggested for local and multicultural education. I was suggesting the Indian education system, of course, the Indian education system was borrowed from the British education system. Everything British, everything foreign we like, we appreciate. But what is missing is local education, the Indian education. So I am very happy that the government or the recent national education policy has given a lot of focus on the local education, the multicultural education, including it is also suggested at least up to class 8, we should teach in their mother tongue or regional languages. I think this is a idea something Amritanandaji was suggesting in his educational treatise. Heart of the Neohumanistic education is environmental consciousness, the sustainable society, the cyclical thinking. Something, in modern times we are now many where we discussion is being going on sustainable development. So sustainable development is something, it is a quality, it is an attribute. So which can be developed, which can be, inculcated among the child from the very early stage of school education. So environmental consciousness should be one essential part of our education as suggested by P.R. Sarkarji. It is something very, very intrinsic I want to highlight here. What Neohumanism suggested, teaching is, what is teaching? So very beautifully it has been explained. Teaching as an empowerment process for child. So very beautifully. So usually when we define in our term what is teaching, I say teaching is something giving knowledge to somebody else. Teaching is something transformation of knowledge, transformation of information. Usually we define, but the Neohumanism has suggested teaching is an empowerment process for child. Empowerment.
Something, I think, Professor Pati was giving emphasis on transformation. The teaching is an empowerment process for each and every child. Teaching is a road to greater independence, self-motivation, problem solving, and teamwork. All are, in a modern terms, all are higher order thinking skills. So I can say, through teaching, through education, Neohumanism suggested to transform each and every child, to make them independent, to create a self-motivation or a problem solver. There should not be competition, always a teamwork and collaboration. So it has a lot of relevance. Even presently, when we are discussing after new education policy, we are also discussing on the same point. So teaching should be a transformational process. Teaching should transform a child to become a good human being, to become a knowledgeable person, whatever he or she may like to do it. But teaching should bring a transformation. So for such kind of teaching that can empower a child, that can transfer a child, so we need a different kind of teacher. As I suggested, a teaching cannot be treated as job. The modern terms we say teaching is a job, but really teaching is a not job. The teaching is a service. Teaching is one of the noblest profession, everybody say. So for this, the P.R. Sarkarji suggested teachers should be a role model. Teachers should be role model for the child. What the teacher says should behave accordingly. Or teachers should act as example for them. The method they have suggested. Example as a method. Example as a method. So wonderful point. Example as a method. Example means from teacher's behavior. From teacher's behavior, a child will learn how to behave it. A teacher should be a noblest human being. The first quality a teacher should be a good human being first. But on the other side, what usually people believe, who is a good teacher? The person having knowledge on the subject. The person having knowledge on the subject cannot be a good teacher. So Neohumanism suggests a person should be a noblest person first, a good human being first, then the person should have a knowledge of the subject, should not understand the child behavior, should not understand the knowledge of child psychology. But the heart of a teaching profession is a teacher should be a good human being first. A teacher should teach from example, not from lecture. I can give a lecture many things, but I do opposite things in real life. So that should not be a role of the teacher or the characteristics of the teacher according to the Neohumanism. The spirit of service. The Neohumanism education, even Anand Marg school is based on this concept of spirit of service. Children are taught or help to develop the spirit of service. They can help, they should learn how to help themselves and how to help others. This is another, maybe essential part of Neohumanistic education. As I said, social consciousness, sense of justice. Here actually, in Neohumanistic education, children are oriented to participate in social change and social reformation. They don't take education as a means to get something, some job or to earn money. That is secondary. Education is something where you can contribute for the change of the society, for the development of the society. You can fight for divisive sentiments that exist in the society, that anti-social elements. Such kind of education we want. And finally, from this
from this principle, I can say the heart of new humanistic education is spirituality. Spirituality is not religion; it is, beyond something that. And the second point is, P.R. Sarkarji want education should bring a holistic development of each and every child, both physical development, spiritual development, mental development. And according to this, the greatest role has been given to the teacher. The teacher should be model. And all the points what I just discussed, some of the points are highlighted in a National Education Policy 2020. I was just scanning the National Education Policy. I found many things. Just one or two things I can see, then I can conclude. The purpose of education is to develop good human beings capable of rational thought action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, sound ethical morals and values. I think this is something I have quoted from the National Education Policy recently brought out by Government of India has, I think, given many points. One of the points, like what the National P.R. Sarkarji suggested for, moral education, suggested for meditation, suggested for yoga education. These are highlighted in the National Education Policy by the Government of India. And another point, like the last point I can say, what the P.R. Sarkarji was also giving emphasis on the traditional knowledge, the indigenous knowledge of our country. And this education policy, for the first time, I can say after independence, which has given a lot of importance to indigenous knowledge. And therefore, Vedas to be taught, the Vedic science, the Vedic mathematics to be brought out to the formal education system, where child from the very early age to the university stage will be educated. They want to, now the Government of India want to bring bring the education system like in Nalanda, like in Taxila, where, like the focus was on all-round development of each and every child, and which was rooted in the Indian tradition, Indian knowledge. So with this, I conclude my lecture here. I give thanks to all my delegates, all the audience, and very senior, all my senior faculties, colleagues, because I listen to them, and I hope, as per my understanding, I have given some idea about the new humanistic education and its relevance for the present day time. So thank you, one and all. Once again, I say namaste to all the experts and Divya Chaitnyanandaji. Namaste. Divya Chaitnyanandaji, Swamiji. Swamiji. Okay. Now you have concluded your talk? Yes, Swamiji. Thank you very much. Namaste. Okay. So there are a lot of programs we are going to organize. We will invite you in another program also. So I heard about you that you have done a lot of work in humanistic education. My scholar is there actually. Yes, Anita Bhaumik. Actually, she has completed her PhD degree with you, no? She worked with me, and in fact, I learned from her, no problem. You have learned from her, yeah. She has learned from you. So learning is a reciprocal process. Teacher learn from student and students learn from teacher, no problem. Okay. So now I will request Anil Pratap Giri ji. So please deliver your talk.
Thank you so much, Swami Divya Chetnanand Avadhutji Maharaj. Am I audible? Are you listening? Yeah. Actually, after a speech of my guru, Professor Ramnath Jha and the great scientist, Professor Uttam Pati, nothing is remaining. So, but I am infusing myself, I can tell like that. So, I start my lecture with invocation because this is my tradition. O Master, thou art the real goal of human life. We are it but slabs of visage, putting bar to our advancement. O God, you are the only power to bring us up to that stage. Om Shanti, Shanti, Shanti. Honorable Vice-Chancellor, Kolhan Vishwavidyalaya, Professor Gangadhar, Panda sir, guest of honor of this session of the webinar, Professor Uttam Patiji, Emeritus Medical Scientist and formerly Dean and Chairperson of Biotechnology, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. My mentor, my guru, friend, guide and philosopher, Professor Ramnath Jha sir, School of Sanskrit and Indic Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Dr. Arvind Vikram Singh, Department of Philosophy, Rajasthan University. Chairperson of this webinar, Professor Mishra, Director, Bharat, Ratna, Gulzari, Nanda Center for Ethics and Philosophy, Kurukshetra University. Dr. Manisha Kulkarni, Madam, Department of Music, Mumbai University. Then Professor Ramakant Mohalik, Professor of Education, Regional Institute of Education, Bhubaneswar. Lakshmi Kant Padi, Associate Professor and Head Department of Philosophy, University of North Bengal. Professor Veena Agrawal, ma'am, formerly Professor of Sanskrit, Rajasthan University. And Dr. Surendra Pandey, sir, Associate Professor, Department of Sociology, Ranchi University. And my Dr. Sunita Sarma, ma'am, Head of Department of Sanskrit, Rajasthan Vishwavidyalaya. My humble pranams to one and all. Friends, I will deliver my lecture through PowerPoint presentation. So I am sharing my screen. आप है ना क्या? थोड़ा सा visible, sir? अच्छा सर मेरी स्क्रीन दिख रही है, विजिबल हो रही है? स्वामी जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, वो विजिबल है? मेरा पीपीटी विजिबल है? नॉट विजिबल। नो। ओके, 1 सेकंड। एक और है, स्वामी जी आप विजिबल है? स्वामी जी एक बार ठीक है, विजिबल। Thank you so much, sir. My topic of this lecture is the view of PR Sarkar on word and meaning, a psychological perspective. I have prepared 4 hypotheses on this lecture. The first is the word is a psychic wave. This is not my view, it is the view of Shrii Shrii Anandamurtijii. The word is a psychic wave, and the meaning of the word is a psychophysical parallelism.
The relationship between word and meaning is based on waves of the objects. The grammar is a relationship which connects waves of the word and its waves of the meaning. So this is 4 hypotheses. Now the question is, what is the language? As per my limited understanding of linguistics and in the view of idea and ideology, a language can be treated. Language has 2 components, we can say. One is the name, another is the form. So language has form and content. In Sanskrit, that is called Nam Rupatmakam Jagat. So form is the name and the content is the roop. Now the question is, who relates form to content? So relationship between form and content is the grammar. Without the grammar, we can't connect the form with content. So now what is the role of the grammar? The role of grammar is well-formedness is the concern of a grammar of a language. This is a pivotal role of the grammar. That is why grammar is a relationship between form and content. So this is a broad picture of the language. Now, if we go in the deep, what is the form? What is the naam? What is the shabd? So, as per P.R. Sarkar's view, all sounds are not the word. Only linguistic sound or linguistic noise can be treated as word. And this is coming from our tradition also. If we look the definition of Shabda in Mahabhasya, first chapter of Mahabhasyam written by Mahasi Patanjali, that is named Paspasahani. In Paspasahani, the Shabd is clearly defined. Enocharitain Sasana Langul Kakud Khur Bishaninam Sampratyayo Bhavati Saha Sabdaha. So this is the Shabda. And Athva, again he enhanced with other point of view, what is the Shabda, what is the form? Patanjali says in Mahabhasya, Pratit Padarthako Loke Dhvani Shabda iti Uchyate. So Shabda, the word, here it is clearly confirmed that all sounds are not the word. Only linguistic sound or linguistic noise can be treated as word. Enocharitain sasana langul kakud khur bishaninam sampratyayo bhavati. Sampratyaya means gyan, knowledge. Now the question is, if we go in more deep, what is the naam, what is the form? So linguistic noise in spoken form arranged in a particular order and are also the orthographic representation, it means written form of the linguistic noise. So form can be divided into 2. One is spoken form, another is written form. Now the question is, what is content? So each content is what the form refers to. The meaning can be treated content. The word of our experience, whatever experience we are having of this universe, that experience can be treated as content. Content, if we see the linguistic point of view, the referent of language can be treated content. So these things can be treated as content. And the grammar is the relationship between form and content. So this is a broad picture of linguistics.
And here Anandamurtiji has emphasized on name and on content and on relationship between name and content. So the grammar is a relationship which connects the waves of the word and with its waves of the meaning. So now Anandamurtiji has clearly pointed out that, see, this grammar is relationship, but relationship of what? It connects waves of the word and with its waves of the meaning. So therefore, the grammar is a relationship between form and content. Now, if we see, P.R. Sarkar also emphasized on Sampratyay and its methodology. Through the language, how we can know the knowledge, how we can get the knowledge, or what is the knowledge, what is the Sampratyay. Now P.R. Sarkar mentioned Sampratyay is waves of the form, content and cognition. This knowledge is the wave of the form, content and cognition. Waves of the form is psychic wave. And waves of the content is psychophysical wave. And the waves of the cognition is psycho-spiritual wave. So he has clearly pointed this Sampratyay is the waves of the form, waves of the content, and the waves of the cognition. So what is the waves of the form? What is the noun? Name is the psychic wave. What is the content? Content is the psychophysical wave. How it is psychophysical wave? Because once one body has recited the dhwani, recited the linguistic sound, how we can get the meaning of particular that linguistic sound? Through the psychophysical wave. Without psychophysical wave, we can't know the meaning of particular linguistic sound. That is why this waves in the form of the cognition, it is the psycho-spiritual wave. If we see the Shruti, Shruti says, Atma va are drashtabhyaha. Now the question is, how? Srotabhyaha, mantavyaha, nididhyasitavyascha. This is the methodology. How we can perceive the Atma. How we can visualize the Atma. So Atma va are, so Atma va are drashtabhyaha. So methodology again he told how? Through srotabhyaha, mantavyaha, nididhyasitavyascha. So what is the srotabhyaha? This is a psychic way. This is the linguistic form of the linguistic noise. And mantavyaha, what is the mantavyaha? This is the content, means this is the psychophysical wave. Without psychophysical wave, we can't know, we can't think. So that is why mantavya is psychophysical wave. And nididhyasitavyaha, nididhyasitavya means this is a cognition, meditation, in which psycho-spiritual wave is in dominant form. So this is, I think, Anandamurtiji has described the language in psychological perspective. And I think this is another chapter of our Indian linguistic tradition. It can be treated another chapter. Now, these three waves are coming from our body, and body he also classified. There are three types of bodies and three types of waves: physical body, mental body, and spiritual body. Anandamurtiji has emphasized more on mental body, and this is called in Sanskrit bhavadhara. Physical body can be say means Jadhara, means the waves of the physical body can be named Jadhara. The wave of the mental body can be named the Bhavadhara. The wave of the spiritual body can be named Chetanadhara. So Jadhara is physical body, Bhavadhara is psychic body, and Chetanadhara is spiritual body. So this Jadhara, this physical wave is the word.
This psychic wave, this bhavdhara, this psychic wave is the word. And what is the meaning? Meaning is physico-psychic wave is the meaning of the particular word. So, what is the Chetana Dhara? What is the spiritual wave? Idea. Idea is the psycho-spiritual wave that can be named Chetana Dhara, spiritual body. Whatever we are thinking, whatever innovative ideas are coming in our mind, without psycho-spiritual wave, we can't formulate the ideas. And what is the ideology? Anandamurtijii clearly pointed out, ideology is the cognition, conceived form of that idea. So ideology can be treated the conceived form of the particular idea. Because all the ideas are psycho-spiritual ideas, that's why we are enjoying in innovative ideas. If new ideas are coming, new thoughts are coming, then we are enjoying because those ideas are connected with our psycho-spiritual waves. So this is we can say one diagram I have presented means how we can formulate the word is psychic wave and the meaning of the word is psychophysical parallelism. So this suppose one person has uttered the sound or word by the speaker has uttered. Then psychic wave of the hearer can be named word. This is Shabda. Through the psychic wave of the hearer, a person cannot know the meaning of this psychic wave without connection with physical wave of the object. That is why if a person wants to know the meaning of this particular wave, this particular word, so he has to connect with physical wave of the object. That is why, what is the meaning of the word? The meaning of the word is psychophysical parallelism. Psychophysical parallelism can be treated as the meaning of the word, and the psychic wave can be treated the word of the speaker. So this is, I think, this is as a student of cognitive science, I think means this is the innovative concept in the field of linguistics that we need further research. So PR Sarkar says the complete development of integral bodies and their parallelism of waves are an essentiality for perfect spiritual realization. Now Professor Sir was saying that means for a spiritual realization, for a spiritual progress, three bodies should be in matured form: physical body, psychic body, and spiritual body. So development physical body is based on good food habits and physical exercise for purifying physical body. Then development of mental body is based on mental food. What is the mental food? Ideas. This is psycho-spiritual parallelism. And physical and mental struggle resulted into creative thinking. Through this, we can develop our mental body. Mental body means psychic body. And development of spiritual body is based on spiritual cult, meditation, and longing for the great. And how it can be possible? And he has quoted from Vivek Chudamani, composed by Sri Adi Shankaracharya, verse number 31. मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी. मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी. भक्ति एव गरीयसी. स्वरूप अनुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते. आई विल डू द पदविच्छेद. स्वस्वरूप अनुसंधानम, स्वस्वरूप अपने ही स्वरूप के अनुसंधान को भक्ति इति अभिधीयते, भक्ति कहा जाता है. कितना अच्छा भक्ति का डिफिनेशन है. एंड और भक्ति क्या है? गरीयसी है. किसमें? मोक्ष कारण सामग्र्याम. मोक्ष कारण की सामग्री में भक्ति एव गरीयसी, भक्ति ही जो है प्रधान है. सो
this is development of spiritual body is based on spiritual cult, meditation, and longing for the great. And I think this is the concept of Sadvipra, because for Sadvipra means physically fit, mentally strong, and spiritually elevated person can be treated as Sadvipra, who can lead the society. Now the conclusion. The contribution of P.R. Sarkar in the field of cognitive science, it is unique. We have to do further research. He emphasized that linguistics may be treated as the subject of applied psychology, because he's named the what is the word. The word is the psychic wave, and what is the meaning? The meaning is the psycho-spiritual parallelism. The meaning is we can say the psychic parallelism with physico-psychic wave. Physico-psychic wave. This is the meaning. So he academically analyzed the word and meaning in the background of Indian intellectual, philosophical, psychological, and spiritual tradition. My Guru Professor Ramnath Jha sir was saying that whatever microbiota and microbiome are named and interpreted with scientific aspect, those things are coming through our tradition. And now his linguistic thinking is not the exception. He has taken the sampratyaya and he has psychologically analyzed what is the sampratyaya, and he has given the scientific term waves, means psychic waves, psychophysical waves, and psycho-spiritual waves. So he academically analyzed the word and meaning in the background of Indian intellectual, philosophical, psychological, and spiritual traditions. That is why this is psycho-spiritual. Actually, it is the typo. Psycho-spiritual parallelism is idea or bhava, and conceiving idea on the psychic level is called ideology. And he has written a wonderful book on idea and ideology, so that is also can be connected here. So what is the idea? This is the psycho-spiritual parallelism, and ideology is the conceiving idea on the psychic level. So this is the lecture on linguistic point of views and psychological point of view, means what is the contribution Anandamurtijii has done in the field of linguistics, and how he has defined what is the word and what is the meaning. So thank you one and all, and again my humble pranams to everyone for your patience listening. And if any suggestion is there, if any question answer is there, those things are most welcome for enhancing my knowledge. Thank you one and all. Okay, now how many speakers are still waiting? Surendra Mohan ji, you are here, and Professor Ajit Kumar Mandal. So no one, I am requesting to Ajit Kumar Mandal. There is one senior professor. She will speak only 5 minutes. Only 5. She is sick. She is a professor of Sanskrit department. She is your colleague. You can say she is your colleague. You are also head of department of Sanskrit. So let her allow for 5 minutes. Only for 5 to 7 minutes. Can you speak? Professor Veena Agarwal. No. Ma'am, Veena Agarwal is there? Hello? Hello? He requested me, Swamiji, please allow before him, but she is not present here. Please wait 1 minute. Just a minute. Sorry, already 3,000 people, more than 3,000 people is watching this YouTube. More than 3,000. Don't think here 10 people, 15 people. Already there is one system. So YouTube channel, no? So people are watching more than, it has crossed 3,000. Hello? हेलो, अभी चलना नेशनल वेबिनार चलना है, जुड़ना है, भेज दूं गूगल ये कनेक्शन. हेलो,
एक सेकेंड सर। हेलो, अच्छा, now Professor Veena Agarwal. Presently, she is a retired professor of Sanskrit department, Rajasthan University. She is a very well known about her knowledge and about Indian philosophy. So I am requesting now, ma'am, just you deliver your lecture. Short, within a short time, because another speaker are waiting for last 4 hours. Okay, go ahead. धन्यवाद। और मैं बिना किसी औपचारिकता के अपनी बात शुरू करती हूँ। वैसे भी कार्यक्रम में अगर बाद में नंबर आता है तो बहुत कुछ तो लोग पहले ही बोल चुके होते हैं, और दूसरी बात ये है कि सब लोग सुनने वाले भी थक चुके होते हैं,
तो मैं कोशिश करूंगी कि बहुत कम समय में अपनी बात करूं। मेरा विषय है अ न्यू पैराडाइम इन इंडियन फिलोसफी, आनंद सूत्र। आनंद सूत्र जो है, जैसा कि अभी रामनाथ झा जी ने भी बताया कि ये हमारी संस्कृत के जो बल्कि षट दर्शन कहें या हमारे जो भारतीय दर्शन जितने भी हैं उनका निचोड़ कहा जा सकता है। इसमें सृष्टि के बारे में जो मैं विशेष रूप से सृष्टि के बारे में बात करूंगी कि सृष्टि की जो बात कही है इन्होंने, सृष्टि की बात जो चेतन से चेतन का जो सामंजस्य इन्होंने स्थापित किया है कि अचेतन और चेतन सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। चार्वाक जैसे केवल चेतन अचेतन की से सृष्टि की बात करता है, जैन पुद्गलों से सृष्टि की बात करता है, बौद्ध भी अलग अलग बाह्यार्थवादी बाह्यानुमेयवादी हैं, विज्ञानवादी शून्यवादी है। न्याय वैशेषिक जब बात करते हैं तो वह परमाणुओं से सृष्टि की बात करते हैं। सांख्य बात करते हैं, सांख्य योग तो प्रकृति और पुरुष की बात करते हैं, और वेदांत ब्रह्म की बात करते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने सबको जोड़ा है, सबके साथ सृष्टि में, जहां परमाणुओं की बात भी की है और परमाणुओं से लेकर प्रकृति पुरुष की बात भी की है, सृष्टि की बात भी की है। तो जैसे जब ये कहते हैं दृक् पुरुषः दर्शनम शक्तिश्च, तो वो दृष्टा दृशि मात्रः शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्यः, जो दृष्टा है, सांख्य का दृष्टा है या योग का दृष्टा है, पुरुष जो है वह केवल दृष्टा है। और जब यह शक्ति दर्शनम शक्ति की बात करते हैं तो यह बुद्धि की बात करते हैं प्रकृति के माध्यम से। उसके साथ साथ ये शिव और शक्ति की जो कश्मीर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो अग्नि की दाहकता उसकी शक्ति है उसकी बात भी करते हैं। जैसा कि शंकराचार्य ने ही कहा है, न शिवः शक्ति रहितो न शक्तिर व्यतिरेकिणी तादात्म्यम अनयोर नित्यम वह्नि दाहकयोरेव। और जब ये कहते हैं गुण बंधनेन गुणाभिव्यक्ति, तो सीधे त्रिगुणात्मिका प्रकृति की बात आ जाती है, त्रिगुण की बात आ जाती है। त्रिगुण जो है प्रीति अप्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्योन्याभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणा। जैसा कि सभी जानते हैं सत्व रज तम जो है ये तीनों एक दूसरे को दबाते रहते हैं। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, वो हल्का होता है, प्रकाशन स्वभाव वाला होता है। और चलम च रजः, रजोगुण होता है, तमोगुण भारी होता है। और ये सब एक दूसरे को दबाते हुए ये दीपक की भांति प्रकाशन का कार्य करते हैं। और दूसरी बात, जब दर्शन की बात करते हैं, गुण अभिव्यक्ति की बात करते हैं, जब यह तो यह दृष्टा पुरुष वैसा ही है जो बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है। चेतन पुरुष जो है, तस्मात् तत्संयोगाद अचेतनम चेतना वदेव लिंगम गुण कर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवति पुमान्। तो वो जो पुरुष है वह गुणों की कर्तृता जो है वह गुणों में है, त्रिगुण में है। और किंतु वह पुरुष अपने आप को, जो उदासीन है वह अपने आप को कर्ता के समान मानता है। और जब ये कहते हैं गुणाधिक्य जड़ स्फोट भूत साम्या भावात्, भूत साम्य, भूत पंच महाभूत जो है उनकी के कारण उनसे समान जब गुणों की अधिकता होती है, तमोगुण की अधिकता होती है, तब फिर क्रमशः आकाश, आकाशात वायु, वायोर अग्नेर अग्नेराप अद्भ्य पृथ्वी, इस तरह से क्रमशः स्थूलतर भूतों की उत्पत्ति होती जाती है। और ये कहते हैं व्यक्ति चित्त और समष्टि चित्त की बात करते हैं। व्यष्टि चित्त जो प्रत्येक व्यक्ति के देह में है, मन में, व्यष्टि देहे चित्तानु समवायेन चित्त बोध, और चित्त और अहंकार में इन्होंने अंतर किया है। चित्त एक स्थूल है, उससे सूक्ष्म अहंकार है। जब रजोगुण, जब हम हर चीज के साथ स्वयं को जोड़ के देखने लगते हैं कि यह मेरा है, यह मैंने किया है, चित्त मानसिक स्तर की बात है। और उसके साथ फिर कुछ अहम जुड़ जाता है, वहां अहम है। और अहम से आगे बुद्धि है, जिसे सत्वगुण प्रधान महत है, बुद्धि है। और चित्ताद अहम प्राबल्य बुद्धि, ये स्वयं कहते हैं चित्त में जब अहम का प्राबल्य हो जाता है और अहम में से जब और महत के बाद बुद्धि, इस तरह से इन्होंने क्रम बताया है। और यह जो गति है वह अहम तत्व से महत की ओर जाती है। सूक्ष्माभिमुखिनी गतिर उदये अहम तत्व महत, सूक्ष्म की ओर जाने वाली गति है, यह महत की ओर जाती है। रजोगुण का प्रभाव जब घट रहा होता है, सत्वगुण का बढ़ रहा होता है। और बुद्धि जब अहम का प्राबल्य चित्त में होता है तो बुद्धि होती है। महद अहम वर्जिते
जीव देहे लता गुल में, अब ये वनस्पति की बात कर रहे हैं कि लता गुल में जो वनस्पति आदि है उसमें केवल चैतन्य होता है और उसमें अहम भी नहीं होता, महत भी नहीं होती, ना बुद्धि होती है ना अहंकार होता है, वे केवल विकसित होते हैं कि इसलिए वह, लेकिन उनमें चैतन्य होता है और चैतन्य के माध्यम से, और जब उनमें अधिक विकास होने लगता है, प्राग्रसरे जीवे लता गुल में मानुषे महद हम चित्तानि, धीरे धीरे जब विकास सृष्टि क्रम का हुआ, चित्त चैतन्य का विकास हुआ, तो पहले लता गुल, फिर एकेंद्रिय द्विंद्रिय जीव, और उसके बाद फिर मनुष्य आदि में, मनुष्य आदि का जो विकास हुआ उसमें महत, अहम और चित्त तीनों पाए जाते हैं, तीनों मिलते हैं। इस तरह से विकास के क्रम में मनुष्य आगे आता है और मनुष्य में भी क्या है कि वह चैतन्य है, सोच सकता है। बहुत सारी बातें इस पर हो चुकी है, तो मैं सीधे बिल्कुल सूत्रात्मक रूप में ही प्रस्तुत कर रही हूँ बातें, कि जब वह चिंतन करता है, सोचता है, स्पिरिचुअल लेवल पर समझ पाता है चीजों को, तो फिर वहां भूमा व्याप्ते महति अहम चित्तयोर प्रणाशे सगुणा स्थिति सविकल्प समाधि वा। ये बताते हैं कि महतत्व का लय जो होता है, भूमा मैक्रोस्कोमिक आई, महतत्व जो है, जो इंडिविजुअल में है, उसका माइक्रोकॉस्मिक जो है उसका मैक्रोकॉस्मिक में लय हो जाता है। जैसे अगर चित्त है तो चित्त का मन में हुआ, चित्त जय एकाकी समष्टि, व्यष्टि चित्त जो है उसका समष्टि चित्त में, व्यष्टि अहम का समष्टि अहम में और व्यष्टि महत का समष्टि महत में लय हो जाता है। और इस तरह से प्रतिसंचर धारा से महत का जो सर्वव्यापित्व है उसको हम देख पाते हैं, जान पाते हैं। और यह स्थिति सगुणा स्थिति बताई है, सविकल्प समाधि की अवस्था बताई है। इसको मैं योग से कंपेयर नहीं करूंगी, योग की सविकल्प समाधि सभी जानते हैं। और इसके पश्चात महत का जब आत्मा में, कॉस्मिक चैतन्य में, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में, सार्वजनिक आत्मा में, समष्टि आत्मा में जब लय हो जाता है महत, तो निर्गुणा स्थिति या निर्विकल्पक समाधि होती है। आत्मनि महत प्रणाशे निर्गुणा स्थिति निर्विकल्प समाधि वा। तो ये क्रमशः जो भूमा में महत का, इंडिविजुअल महत का भूमा महत में जब लय हो जाता है तब वह निर्विकल्प समाधि होती है। जैसा योग सूत्र में कहा है, स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्येव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का, स्वरूप शून्य की भांति, जहां स्वरूप बिल्कुल समाप्त हो गया है और निर्वितर्क समाधि होती है। और जैसे इसके लिए प्रमाण भी इन्होंने, जैसे निद्रा के लिए प्रमाण दिया है, अभावोत्तर आनंद प्रत्ययालंबनी वृत्ति निद्रा, और जैसा कि योग सूत्र में भी कहा है, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। मतलब हम कैसे माने कि वाकई ये स्थिति संभव है, ये स्थिति हो सकती है। तो इसके लिए प्रमाण वही निद्रा का प्रमाण है। निद्रा में जैसे हम सभी चीजों का लय हो जाता है और उसके बाद जब हम जागते हैं तो हमें ये ज्ञात रहता है कि हाँ, हम कुछ नहीं जान पाए, सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। तो उसी तरह से यह जो अभाव स्थिति है, निर्विकल्पक समाधि की स्थिति है, यह भी वैसी ही स्थिति है जहां सब व्यक्तिगत भेद का लय हो जाता है और नानात्व की स्थिति समाप्त हो जाती है और एकत्व की स्थिति बची रहती है। तो यही बात इन्होंने सृष्टि के प्रारंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक धारा, प्रतिसंचर धारा के माध्यम से जो बात कही गई है, सृष्टि कैसे होती है और कैसे उसका वापस भूमा में लय हो सकता है, यह जो बात बताई है, इसे मैंने संक्षेप में बताने की कोशिश की है क्योंकि समय बहुत कम है और इसलिए मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोगों ने अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, माइक आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। आपने सृष्टि का समझाने की कोशिश की। एक्चुअली मुझे बोलने का था, लेकिन इसमें हमारे स्पीकर थे और सबको अपने इच्छा के अनुसार बोलने दिया गया। आज किसी को हम कमी नहीं रखे, तो मैंने सोचा मैं ही क्विट कर जाऊं, ताकि देखिए गुरुदेव की आशीर्वाद से मेरा जो मुझे जो बोलना था साइकिल ऑफ क्रिएशन सृष्टि चक्र, वो आपने कवर कर दी। अब हम प्रोफेसर अनिल कुमार मंडल जी से रिक्वेस्ट करते हैं, काफी डायनामिक आदमी है और ये बोले कि हम संस्कृत में ही बात करेंगे। हमने अच्छी बात है,
इंग्लिश हिंदी तो होता ही है। चलिए, हमारे एक स्पीकर आज आनंद मूर्ति जी के लैंग्वेज को लेकर संस्कृत में बात करेंगे, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना वक्तव्य। आर यू लिसनिंग? ओम नमो भण्डदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। I respect Honorable Vice-Chancellor ji, Honorable Chairperson SK Mishra ji, all dignitaries, delegates, research scholars, and महाभागाः आनंदमूर्तिजी विषये आलोचितवन्तः। आनंदमूर्तिजी उच्चतरस्य दार्शनिकैक तस्य भावना जनसाधारण मध्ये अधुना प्रतिफलिता। तस्मात् कारणात् दिशि दिशि तस्य दर्शनम् अनुष्ठितम्। तं स्मरणाय भारतवर्षस्य दिग्दिगन्तरे आलोचनाचक्रस्य आयोजनं भवति। एकम् आशयस्य लोको तथा कस्मिन् विषये निष्णातो आसीत् तस्मिन् विषये जानामि न अहं, किन्तु तत्र भवतः कला तन्त्र योग इत्यादिषु विषयेषु ज्ञानमासीत्। लोकशब्दस्य अर्थकृतवान् स्तरः यथा भूलोकः भुवलोकः इत्यादयः। यद्भवतु मम विषयः आनंदमूर्ति दर्शने भाषाया उच्चारणम् इवाल्युएशन ऑफ लैंग्वेज इन द लाइट ऑफ आनंदमूर्तिजी। पृथिव्याः सर्वभाषैव एकस्मिन् सूत्रे निबद्धा यथा सूत्रे मुनिगणा इव। कापि भाषा नियमोतिरिच्या न वर्तते। बहु पूर्वे यदा लिपिमाला नासीत् तदा किन्तु शब्दविज्ञानम् आश्रित्य भाषा ऋग्वेदस्य युगे क ख ग घ इत्यादीनि लिप्यादीनि केन प्रकारेण लेख्यम् अभवत् तत् कोऽपि न जानाति। आनंदमूर्ति दर्शने लिपिमाला आगच्छति स्वैन्धवी लिपितः, किन्तु लिपि यद्यपि नासीत् तथापि छन्दो आसीत्। वेदे छन्दांसि सप्त यथा गायत्री उष्णी अनुष्टुप् जयति पंक्ति तिष्ठुप् जगति इति। वैदिक भाषाया उच्चारणं विवृतम्। आनंदमूर्ति दर्शने संस्कृत भाषाया उच्चारणानि त्रीणि यथा संवृतं विवृतं तिर्यकञ्च। वैदिकस्य संस्कृतस्य च उच्चारणानि मात्राभेदेन प्रकारत्रयम् यथा ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। आनंदमूर्ति दर्शने संस्कृतस्य स्वीकृतम् उच्चारणं प्रकारचतुष्टयम् यथा काशिका दक्षिणी महाराष्ट्रे गौड़ीयश्च। संवृते वर्णसमूहानाम् उच्चारणं बंग उच्चारणवत्। विप्रदेश ऋग्वेदीय रीतिवशात् अक्षरस्य संख्या 50। तन्मध्ये स्वरवर्णा 16 व्यञ्जनवर्णाः 34। आनंदमूर्तिजी उच्चारण विषये किञ्चित् नीति निर्धारणं कृतवन्तः। तस्मिन् विषये व्याकरणस्य स्पष्टं सूत्रं नास्ति। अथच वयं व्यवहारं कुर्मः यथा ड ढ इति अक्षरद्वयमस्ति। ड अक्षरं यदि शब्दादौ तिष्ठति चेत् उच्चारणं भवति ड डिए यथा डम्बरू, किन्तु मध्ये अन्ते च तिष्ठति उच्चारणं भवति ड र आगे यथा आडम्बरः। यदि शब्दादौ
ढ अक्षरमेतत् पदानां मध्ये अन्ते वा तिष्ठति चेत् तदा उच्चारणं भवति आषाढः आर् एच् तथा य उच्चारणस्य किञ्चित् नियमा सन्ति पदान्ते पदमध्यस्थे जकार इ अ उच्यते यदि च पदादौ तिष्ठति यमुना किन्तु यदि पदमध्ये अन्ते वा तिष्ठति तर्हि उच्चारणं भवति इय यथा वियोगः समयः बालानां विभ्रमणं न चेत् तदा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महोदयः पदमध्ये अन्ते च ढयो निम्ने बिन्दु चिह्नं दत्त्वा वर्णपरिचय अक्षरद्वयस्य अन्तर्भुक्तिं कृतवन्तः आनन्दमूर्ति दर्शनं तत्रापि गच्छति वेदस्य उच्चारणोपरि अपि तस्य दर्शनं प्राप्तं तत्र भवान् उल्लेखं कृतवन्तः रि डबल रि लि डबल लि विषये ऋग्वेदादीनाम् उच्चारणं विभिन्नम् ऋग्वेदस्य एतानि रि एल् आर् आर् यजुर्वेदस्य रि आर् ऐ लि एल् आर् यु डबल रि आर् आर् यु लि एल् आर् यु डबल लि एल् डबल आर् यु एवं आनन्दमूर्ति दर्शने र अक्षरं यदि पदादौ सति तर्हि उच्चारणं रण एतद्दन्त्यर् जिह्वाया दन्तं स्पृष्ट्वा उच्चारणं र चेत् मध्ये अन्ते च वर्तते यदि एवं ल अक्षरं पदादौ चेत् तद् उच्यते आदिल यथा लता अन्त्यल उच्चारणे रस्य मिश्रणं भवेत् यथा फल्र फल्रे फल्राणि उत्तर भारते किन्तु ईदृशम् उच्चारणम् अनुसृतं न भवति आनन्दमूर्ति तस्मात् संस्कृत पंडिता विभ्रमात् अन्य प्रकारम् उच्चारणं करोति आनन्दमूर्ति दर्शने ज रल एतानि चतुर्वर्ण समूहानि न शुद्ध व्यञ्जनवर्णानि कथं प्रकृतपक्षे स्वरवर्णद्वयस्य संयुक्तिः दीप्तम् एतानि वर्णानि यथा ज इ जोग अ र रि जोग अ ल लि जोग अ ब उ जोग अ एतेषां भ्रमवशत व्यञ्जनानि इति कथ्यन्ते किन्तु एतानि न व्यञ्जनवर्णानि आनन्दमूर्ति दर्शने भाषा अवश्यमेव साहित्यं लिटरेचर एतद् लैटिने लिटर इत्यस्मात् आगतः यस्यार्थ इष्टकं ब्रिक यदा खोदित प्रिंटेड अक्षराणि न प्राप्यते तदा एकैकम् अक्षरम् अग्नौ दग्ध्वा व्यवहारं कृतम् तेषाम् अक्षराणां नामानि अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा थीटा इत्यादि तानि इष्टकवत् दग्धत्वात् तानि लैटिने लिटर लैटेराइट सायर ईदृशै अक्षरै शिल्पशैली तत् लिटरेचर इति अभिहितः साहित्यं लिटरेचर च न समधर्मी तस्मात् केवलं शिल्पशैली इत्यार्थे प्रयुज्यते अतएव सर्वं साहित्यं लिटरेचर किन्तु सर्वं लिटरेचर इति साहित्यं नैव अधुना आलोच्यते
ভাষানাং শব্দানাং উচ্চারণম ইভালুয়েশন বিবর্তনম বুৎপত্তিশ্চ। আনন্দমূর্তি দর্শনে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এতেষাং পঞ্চতন্মাত্রানাং মধ্যে শব্দ সূক্ষ্ম। নিউ টেস্টামেন্ট ইতি নয়ে বক্তব্যমস্তি সৃষ্টে প্রাক आसीत् शब्दः वेदेऽपि उच्यते शब्द ब्रह्म प्रणमात्मकं ब्रह्म। सुदूरे अतीते मानुषो विभिन्नं शब्दं श्रुत्वा तस्य उद्रेकं भवति तत् भावं स ध्वनिना अभिव्यक्तुं चेष्टयति। एतत् যত ব্যক্তিকরণম তদ আদৌ কেবলম ক্রিয়ারূপম ভার্বাল রূপ আसीत्। তস্মাৎ ক্রিয়ারূপাৎ প্রাক উত্তরঞ্চ প্রত্যয়যোগেন বিভিন্নः শব্দः সঞ্জাতः। ভাষায়া বিবর্তনম দেশ কাল পাত্র ভেদে পরিবর্তনম জাতম। যস্মাৎ उत्पन्ना क्रमशः व्यक्तिकरणस्य प्रति बीज मध्ये यथा अंकुरोद्गमनं भवति तस्मिन् बीज मध्ये यथा बृहत् संभावना तिष्ठति तथा धातुतः प्रत्ययादि माध्यमेन व्यक्तिकरणं भवति। धातुतः विवर्तन माध्यमेन उत्पत्ति माध्यमेन उत्सारणेन च यानि पदानि सञ्जातानि तानि किंचित उदाहरणानि दातुं चेष्टयामि। तत् अवश्यमेव आनन्दमूर्ति दर्शन दिशा देवतानां नाम विषये कानिचन उदाहरणानि यथा जनार्दन जनानां जन्म अर्दयति स भक्तानां जन्म मृत्युं निवारयति स जनार्दन। नारायण नार जोग अयन नारस्य अर्थ जल जले जस्य स्थिति स नारायण। जलपुरी सर्पे स्थित शयान नारायण। बजरंग बोली वर्जयति अन्येषां बलं प्राणं। बा वज्रसदृशं मुखमित कर्मधराय यस्यास्ति तद् बलं स बजरंग बोली। बुढ़ो शिव आनंदमूर्तिजी अत्र व्याख्यायते। बुढ़ः वयजफलभिक्षु विवाहितः यः प्रथम विवाहित पुरुषः तस्य तिस्र स्त्री आर्यकन्या पार्वती द्राविड़ कन्या काली मंगोलीय कन्या गंगा। प्रचलित संगीतमस्ति एकम्। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এলো বান পাড়েন এক কন্যে খান আর এক কন্যে রাগ করে বাপের বাড়ি যান। তথা ফলম নারকেলম নীর গ্রেটার দেন নার অর্থ জলম পর গ্রেটার দেন কের গ্রেটার দেন কেলো জলম করতি জ স নারকেল। মর্তমান কলা বার্মায়াং মর্তাবান প্রদেশাৎ আগচ্ছতি তদা তস্য অমর্ত্যমান গ্রেটার দেন মর্তমান। ব্রীহি কথম আনন্দমূর্তি দর্শনস্য ব্যাখ্যায়ম आर्यगण भारते आगच्छति ते पश्यन्ति धानतः विविध वस्तु संभावना यथा चिपिटक चिरा मुड़ी भर्ज खाना क्षीर क्षीर पायस पयस इत्यादयः
বহু যোগ রিহি রাইস সমান ব্রিহি। ব্রিহিত চাল বঙ্গভাষায়াম চাল চালং কথম ধানানাং ঢেকি ইতি মাধ্যমেন তেষাং আবরণম স্খলনম সঞ্জাতম ততঃ তেষাং করণানাং সখীকরণায় যৎ মাধ্যমে চালা ইতি ক্রিয়পদাৎ চাল ইতি নামনা কথ্যতে। প্রাচীনকালে ধান্য অবরণম পৃথকীকরণায় ধীরস্য কার্যকালে ধান্যে আঘাত সময়ে ধান্যস্য উল্লম্ফনাৎ তথা তাণ্ডবাৎ তস্য নিরাবরণস্য ধান্যস্য নাম তুণ্ডুলমিতি কথ্যতে। সাকলম্বী সাকমেতৎ আনন্দমূর্তিজি বদতি greater than ইন্দ্র উব greater than রুয় ইন্দারা। খাদ্যবস্তু মধ্যে কচুরি লিটিল বা কোচ্চে ইতি পদম আগচ্ছতি। বিবর্তিত সন তথা কোচি শব্দ এতদ কোচ্চে শব্দেন সহ পুরী যুক্ত সন কোচ্চে পুরী কোচ্চে উরি হিন্দি ভাষায়াম কচৌরি বঙ্গ ভাষায়াম বিতি শব্দ বিগত শ্রী বিতিকিচ্ছি কেলেঙ্কারি শব্দ অর্থপ্রাকৃত। আধিক্যা শব্দ সর্বৈব ভ্রান্তিজনক যোগ স্নেহ আধিক্য যোগ তল অধিকতা বা কিন্তু আধিক্য শব্দেন সহ তল তা প্রত্যয়েন সঞ্জাত আধিক্য যোগতা আধিক্যতা আধিক্য অর্থ এবং সর্বমাধিক্য অই অ এও ভাইপো ভ্রাতাপুত্র পুত্রৈড পুত্র গ্রেটার দ্যান পুত্র প্রাকৃত পুয় পো ভ্রাতা ভাই ভাইপো। নাতি ন অতি নাতি বংশস্য ন অতিরিচ্যতে বংশং কুলং বা পতনাৎ য রক্ষতি স নাতি। ভগিনী ভগিনী প্রাকৃতে বহগিনী বগহিনী বহিনী বহিন বইন বন। পিতা পা পালনকর্তা ত্র ধাতুর অর্থ ত্রাণকর্তা য পালনকর্তা ত্রাণকর্তা চ। গুরু গো সজ্জা গ রু কিন্তু এতস্যাং অক্ষর সজ্জায়াং গরু ইতি শব্দ গরৈরস্যু ইতি শব্দ সঞ্জাত সভ্রান্তিজনক বাছুর বৎস যোগ রুক গ্রেটার দেন বৎস রু অ গ্রেটার দেন বৎস রু অ গ্রেটার দেন বাছুর। আনন্দমূর্তিজি কিয়ৎ স্থানানাং নামানাং উৎপত্তি বিবর্তনঞ্চ প্রদর্শয়ত যথা হরিয়ানা হরিয়ানা কথম কথম নাম হরিত ধান্যং যত্র মিলতি অর্থ এবং সবুজানাং সমারোহ যত্র বর্ততে বৃক্ষানাং উদ্ভিদানাং যত্র উৎপন্নাং ভবন্তি তস্মাৎ হরিত ধান্য। ষোড়শ হরিত অহান্য অর্ধ ষোড়শী লুধিয়ানা লুধ্র ধান্য লোধ
लुधहाना greater than लुधियाना greater than लुधियाना यत्र यत्र लुद्ध पुष्पाणि स्वामी स्थान स्वामी greater than साई प्रकृति साई स्थान greater than स्थान प्रकृति ठाई अर्ध प्रकृति ठाई प्राचीन बांग्लाয় ठाई थिया थिया साई थिया मुंबई तत्र एका देवी अस्ति नाम मुम्बावती तत्रतः मुम्बावती मुम्बाबुई मुंबई बोम्बई इलाहाबाद अल्लाहाबाद अल्लाह यत्र वसति लंडन फरासी तत् नगरम स्कॉटलैंडीय उच्चारणे लंडन तत् लंडनं विवर्तित सन लंडन इति कथ्यते। मैं कॉन्क्लूड रहा हूं एवं असंख्य शब्दानां व्याख्या तत्शब्दों मध्य परिदृश्य आनंदमूर्ति जी भाषा विज्ञान उपरि यद्दिग्दर्शनं कृतवन्तः स व्यावहारिकः तत्सम्बन्धी सर्वेषां ज्ञानं स्थितीकरणम् आवश्यकम्। अन्ते सर्वेभ्यो विशेषतः दिव्यचित्रानंद महाभागेभ्यो धन्यवादं विधाय इति विदायी भवामि। धन्यवादः। एक और डॉक्टर सुरेंद्र मंडल फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी इज एचओडी ऑफ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट। प्रोफेसर सुरेंद्र मंडल जी सॉरी सुरेंद्र पांडे जी अभी जस्ट थे यहाँ पे। हाँ आगे सुरेंद्र पांडे जी डॉक्टर सुरेंद्र पांडे जी आगे हाँ सुरेंद्र पांडे जी जुड़ गए हैं। हाँ अब हमारे लास्ट स्पीकर हैं डॉक्टर सुरेंद्र पांडे एचओडी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट रांची यूनिवर्सिटी। हाँ सुरेंद्र जी आप अपना वक्तव्य रखें। आवाज आ रही है क्या अनिल जी? आवाज आ रही है क्या? जी स्वामी जी आपकी आवाज आ रही है। पांडे सर का जो माइक्रोफोन है वो म्यूट है, कृपया उसको अनम्यूट करें। पांडे जी अनम्यूट करें प्लीज, अपना फोन को म्यूट करें। म्यूट अनम्यूट है आपका? नहीं म्यूट है। म्यूट है। हेलो चले गए सर लगता। हेलो प्रॉब्लम आ रहा है ना? एक टेक्निकल प्रॉब्लम तो है। आप फिर जुड़े। हाँ सर बोलिए। सर वो छोटा सा माइक का एक निशान होगा उसको आप उस पर क्लिक कीजिए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, रेड के ऊपर जो है ना उसको क्लिक कीजिए, रेड के ऊपर क्लिक कीजिए, रेड दिखाई पड़ रहा है ना, क्लिक कीजिए इसको। समझ नहीं पा रहे।
फिर चले गए सर। फिर जुड़ेंगे। फोन करके बताना पड़ेगा। हेलो, वो आप जो रेट दिखाई पड़ रहा है ना, उसको उस पर आप क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए रेट पर। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, आप रेट के ऊपर टच कीजिए ना, क्लिक करने से रेट हट जाएगा ना। उसके ऊपर क्लिक कीजिए, रेट के ऊपर क्लिक कीजिए, रेट बटन है ना, इसको क्लिक कीजिए, रेड बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, रेड बटन के ऊपर, रेड बटन दिखाई दे रहा है ना। हेलो हेलो हेलो, स्वामी जी, हमें लगता है कि समय ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो खत्म। हाँ, हम सब मिश्रा सर को सुन ले तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ ठीक है, मिश्रा जी आप बोलिए, कब तक कंक्लूड पाएंगे तो ठीक है। हाँ मिश्रा जी, आप ये कीजिए, साउंड नहीं आ रही है, माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए मिश्रा सर। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। मिश्रा जी, पांडे जी नहीं बोलेंगे? नहीं, वो जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके। अगर जुट जाएंगे तो फिर दे देंगे सर, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, आप बोलिए, टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ राइट राइट है, बिल्कुल। आप बोलिए, अगर जुट जाएंगे तो दे देंगे। हाँ यस यस। दिक्काला जनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। सर्वानपि प्रणम्य सर्वान् समादरणीयान्, विशेषतः स्वामी दिव्यचेतनानंद अवधूत महोदयाः, आचार्य उत्तमपति महोदयाः, आचार्य गंगाधर पंडा महोदयाः, कुलपतयः, मुख्यातिथयः अद्य, अपि च प्रोफेसर रामनाथ झा महोदयाः, डॉक्टर अनिल प्रताप गिरी महोदयाः, तेषां योग्य शिष्याः, आचार्याः वीणा अग्रवाल महाभागाः, अन्ये सर्वेपि यत्र विराजन्ते, प्रोफेसर अजित कुमार मंडल महाभागाः, प्रोफेसर रमाकांत महोदयाः, एवं च डॉक्टर मनीषा कुलकर्णी महाभागाः, समेपि अन्ये येपि समेषामपि अहं हृदयेन स्वागतं करोमि, अभिनन्दनं करोमि। महानयं विषयः, भारतात्मा सुमहान् वर्तते। एष भारतात्मा संपूर्णे विश्वस्मिन् विश्वे जे जीयते जोघुष्यते। यदि अद्य कोऽपि न्यूजीलैंड देशे संस्कृतेन शपथग्रहणं करोति मन्त्रिमण्डले, तस्य स्पन्दोऽपि अत्र अनुभूयते। तत्र मया उल्लिखितं, कदाचित् साल्मली द्वीपः आसीत् ऑस्ट्रेलिया, तस्य एव दक्षिणभागः तावत् न्यूजीलैंड वर्तते। तत्रापि कदापि अस्माकं धर्मः, तस्य धर्मस्य संवाहकभूता संस्कृतभाषा अत्यपि गतवती स्यात्। सर्वाणि श्रोतांसि श्री श्री आनंदमूर्तेः तानि श्रोतांसि संस्कृत प्रभवानि श्रुति प्रभवानि। श्रुतिर्नाम
निगमाः आगमाश्च निगमाः निगमानाम् एकः शब्दः ब्रह्म आगमानां शब्दद्वयं शिवश्च शक्तिश्च पुनः शिवश्च शक्तिश्च इति विस्फुर्य भिन्नाः भूत्वा पंचदेवतानां स्थानं गृह्णन्ति। पंचदेवतायतन विषये कुलपति पंडा महोदयाः तत्र अभासन्त। वस्तुतः कथम एक एव एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति प्रथममण्डले विदेशमन्त्रः बहु स्पष्टतया एतद् अभिव्यनक्ति। यतो ये मण्डलभागाः संस्कृतेन उक्तवन्तः मया चिन्तितं मयापि संस्कृतेन तावत् भाषणीयम्। कुतः संस्कृतं यदि भाषा भविष्यत् तर्हि अद्य कदाचित् वयं श्री आनन्दमूर्तेः दर्शनम् इतोपि गम्भीरतया यान् विषयान् उक्तवन्तः आचार्य उत्तमपति महोदयाः बहुदिनेभ्यः प्रतीक्षे स्म तेषां पुनः भाषणं श्रुता आसंस्ते पुनः मम इच्छा आसीत् तेषां पुनः अहं शृणोमि। तैः सह यदा आचार्य झा महोदयाः वदन्ति तद् द्वयि अत्यन्तं प्रीतिप्रदा भवति कर्णयोः मनसः। यतोहि परिपूरकम् अनिपूरकं च भवति तयोः परस्परं वचः मिथः संवादः तत्र। तथा अद्य एतस्य अवकाशः राजस्थानभूमौ एषोऽपि ब्रह्मस्य देशः मत्स्यदेशः अत्र अस्यां भूमौ अद्य एषः अवसरो लब्धः तदर्थं बहु कृतकृत्योऽस्मि। तत्र समयस्तु न्यूनः वर्तते। तत्र आचार्य पंडा महोदयाः बहून् विषयान् तत्र उल्लिखितवन्तः बहु सुवर्णतया। ते न केवलं शिक्षायाः आचार्याः सन्ति ते सांख्ययोगादि दर्शनानां व्यासविद्यायाः पुराणानाम् आचार्याः सन्ति। ते जगन्नाथ संस्थ विश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतयः सम्प्रति कुलपतयः कोल्हान विश्वविद्यालये ते अत्र मुख्यातिथिपदे विराजमानाः सन्ति। ते प्रथमवारम् आनन्दमूर्तेः एतान् विषयान् अभिजिगमिष्यन्ति अपि च तैः स्ववचोभिः तत्र एषः प्रकाशः कृतः यत् एते ये विषयाः उच्यन्ते ते विषयाः पूर्वं सूक्ष्मतया अस्माकं पुराणशास्त्रेषु वेदशास्त्रेषु विराजमानाः सन्ति। पुनः तत्र आचार्याः उत्तमपति महोदयाः he spoke something earlier also. I listened to him. He was highly critical, highly systematic, highly technical. But this time, as I pointed out by Professor Jha, he has come down to our level. Our level is a layman, knowing a little philosophy, a little Sanskrit, a little language, a little of Shrii Anandamurtijii. Professor Pati actually, he is this microvitum. That's the particular a theory that he gave in 1988. Because he has also a very long background, perhaps it is highly necessary that we check into all his sources. What are the sources of Shrii Anandamurti? One source, one chief source is intuition, is great intuition. But the other sources also which we must look into. So perhaps sometimes I think, now just I listening to his things on linguistics and language, I was thinking that very broadly, with a very broad mind, and with the Anukula Tarka, whatever is written should be, you can say, supported with long footnotes from the sources that he might have taken from. And those sources should be revisited. If we revisit those sources with the light from Shrii Anandamurti, those sources will speak to us more than modern scientists are also able to give to us. Because modern science also is always a necessity of the ancient literature. Even some speaker, because one by one I shall not take up because the time is up, somebody quoted from the New Testament. I wish there should be light, and there was light like that. And Jeranson poem I read in my graduation in Revensa College, I remember there was a word, and the word was swaddled in darkness. This word, and word
Another word, everything is word. So in Tantra Loka, the great Acharya Abhinav Gupta, he speaks to us that Vak is ultimately Shiva. There is no difference between Shiva and Vak. So Shiva, if Shiva is Artha and Vak is something different, we don't reach out there. Vak and Shakti and Shiva, they are one. True identity, ekam sad vipra bahuda vadanti. So a kind of echo in the word by Shrii Shrii Anandamurti. Yes, Vipra already we always they are moving because they have to speak something. Dvijati Bhava Dupapanna Chapalaha, somewhere Kalidas says the fifth canto of Kumar Sambhavam is Vipra. Then sometimes I also think, because he is speaking of language and linguistics, sometimes I think that B and Pra, only two upasargas are there. So there are so many kinds of explanations. Some are emotive, linguistic, and some are personal. So our word structure, throughout the world, all the languages, one cannot find that kind of word structure. And Dr. Anil Pratap Giri, he writes very nicely. He has put it, and it's so vital. Vitally, he can present a thing with that kind of love, dedication. So that I appreciate in him, Dr. Giri, and his guru of, so is one I find any that into Vedanta, into Sanskrit. So this kind of vision is necessary actually to understand Shrii Shrii Anandamurti. We are people, we are doing jobs, as that education professor told us. We are not doing service. But teachers, Shrii Shrii Anandamurti also is a world teacher. He is doing no job, but also he is doing no petty philosophical systems. What now, what it melted down to, boiled down to, see what he did in British Museum Library. That man without food in his stomach. Karl Marx, his Das Kapital, I sometimes called him a rishi when I was a student. But the fallout, what happened? What happened to JNU recently? What happens to China at present? What happened to USSR? And had there been no Gorbachev, that glasnost and perestroika? What would be happening now along with China, USSR? So we have to have God. We have to have soul. We have to have true empathy. We have to have that mantramaya, chaitanyamaya purusha. So for that, we have to see how Shrii Shrii Anandamurti is gradually coming into our lives. And such people, and he is supported by, he is also a supporter of all the great spiritualists since the times of the Rigvedic seers, and who not, and our Samaveda, the music that Manisha Kulkarniji, you see, because music, because harmony, we have to create harmony, Sama, and Sama, Dana, Danda, Veda, 4. First is Sama. This Sama and that Sama you can tell it, because we have to have a harmonious living. But harmonious living, the sustainable development, this word also came in between. How the sustainable development, how you have to do this. And perhaps India should be the world leader, because we have so much of stock of knowledge. See, this proudest economy, does the world anywhere? Does the UNESCO has it? Does the UNO have something like this? Does the IMF think of something like proudest economy? The 5th section of the Ananda Sutram, how important it is. And perhaps like say, they happen to be in such a situation that Bhutanese people. And what they did, you see, such a small, you can say, this king's kingdom, and happiness index. Can we do Ananda index? Because we are not after hedonistic pleasure, sensuous pleasures, we are not after happiness, the so-called happy life or good life, we are not after that. Beyond that, joy, beyond that, this. So Ananda Deva, last time Professor Jha gave a very nice interpretation of Ananda, and the Upanishads he quoted him very nicely. So Ananda Deva Kharu Imani Bhutani Jayante, Tena Jatani Jivanti, Tad Prayamti, Avisam Visanti, Tad Vijijasasya Tad Brahmeti. That Brahman is Ananda.
And Ananda is beyond Anandamaya Kosha. So when one merges over there, then one has to come back. And coming back, Mama Sadharmya Magata, Sargepi Nopajayante, Pralayena Betanti cha, the whole time will pass for us. Eternity. And we live up to eternity. And when that kind of new humanism, that new human being arrives on earth, he has arrived. And we can have so many symbols, so many in terms of that. How this great intuition comes. But all human beings, just like now, all human beings are uniquely different. Or everything is uniquely different. For that, our Kanama's Vaisheshika Sutra, there is something called Vishesha Padartha. So each, any two atoms are also different from each other. So what to speak of human beings and such divine beings? So they will be different from each other. Each will come for a different task. The thing of Narada was taken, one of my teachers, a professor, is now retired. He worked on Narada. Narada, when he was given the task by a Harvard returned professor to him, so he said, I am a man of grammar and I am being asked to work on Narada. But he could not refuse. But later he told us that I was so in a way astonished to see the character of Narada. What a great man! Nara means jnana. Apo nara iti puttaha. So Narada is a jnana pradata, the giver of knowledge, the knower of knowledge. And this telepathy was being spoken about, Professor Pati, how this, they will be telepathically knowing each other, such updated, no teleportation will be necessary. At will you can send things anywhere. At will you can talk to people. This Dakshinamurti concept. Now Dakshinamurti will come back. Dakshinamurti for the Vedantins, I should say the Vedic Vedantins, and the Saiva Saksa Vedantins, he comes as the Guru. Dakshinamurti, through Dakshinamurti Sutras by Acharya Shankara. So that way if you can do that, this thing actually will, in a way, all these people, and on education, on anything, a holistic life, integral education, and integral education of Adhyatma, Adhyatma Vidya Vidyanam, Professor Jha quoted. Adhyatma Vidya Vidyanam, without Adhyatma, Adhyatma should be the fundamental, the very base. Without Adhyatma, we should not move an inch. So perhaps one started at the age of 3, he had the sacred threads to this Shankaracharya. And see what great things he did. Ashtavarse Chaturvedi Dwadase Sarvasastravi Shodase Kritavan Bhashyam Dvatrinse Munirabhyagat. She is such a great person. You see the Hinduism, that book by Hirasi Chaudhary, a great man who taught English to English people. But he, Ananda Kumar Murthy, who came to Haridwar to have sacred threads, that man writes on Hinduism, writes on the Vedas, writes on Purusha Sukta, Vak Sukta. What great man he is. That inspiration will come from understanding the culture and being spiritual. So spirituality is the hallmark for Shrii Shrii Anandamurtijii, and below that, from that, because it's Chiti, in Yoga Vasishta Maharama it comes. There is a Bhutakasa, there is a Chittakasa, there is a Chidakasa. So the Chidakasa, that is not spoken of by the Buddhists. We must know, we have great respect for them, but we also must know where their limits are. They can't speak of Chidakasa. They have to keep silent with Chittakasa. That is so taught years in Nalanda. In Nalanda, where all the foreign people also came to learn so many things, including Artha Shastra and to Takshashila. So we have to see how the Samana traditions, we have to go a step beyond that. So he has taken perhaps one word Bodhi from the Samana tradition, Bodhi. But Bodhi he takes in a new color, in the Vedic and Tantric color. So Tantras are also not something very ignoble. They are very great things. So the Vedas and the Tantras, the Nigamas and the Agamas, both are Shrutis. And Shruti means the eternally they are with us. So if we actually know all these things, so Shrii Shrii Anandamurtijii, and he is going to be a movement, and the way in biosciences, in philosophy, in music, you can say language and linguistics, and I think one full seminar should be dedicated to language and linguistics, the way he treats things.
Now many words of Urdu and Arabic tradition also he finds in Sanskrit, because Sanskrit has gone all over the world. Now so many researches are being done on that. So many researches have been done on the exactly words and sentences written on the pyramids. So how Sanskrit is everywhere. And to Dharma seminar in Bodh Gaya, those people came from Greece and they accepted. They accepted. And I had discussion with Dr. David Frawley that they accepted that Greece had an earlier chapter of Indian influence. And that thing I told about that Vivekananda story that he about Socrates, and what that Socrates asked that person, "Oh, are you from India? Are you a fakir from India? A mendicant from India, monk?" He said, "Yes, I am from India." Because the India man also can speak like this, that unless one knows God, one cannot know a human being. So through God we can better a human being, we can more elevate a human being, and all the elevated human beings are godly human beings. And God and human being are one. So this Advaita, Advaitam Paramarthataha, but Vyavahare Bhattanayaha. Also Shrii Shrii Anandamurti, he speaks of Bhattanaya of Advaita. One has to come down. If in Shiva Sutras, one sutra is Chaitanyam Atma, the very first sutra, then later Chittang Atma. Atma also becomes Chitta. And Chitta Parudha, Chitya Sankochine Chittam. Sir Bina Agrawal is there, CA, and adopt of caste. Chitireva, Chetana Padata Varudha, consciousness stoops down, comes down, or translates itself into becoming the mind. There is a 40 days workshop on mind in VHU IIT. Chemical engineering department was doing that. So one day I was there and I saw what are the things on my mind. There are so many things. But Shrii Shrii Anandamurtiji, I don't know, in Ramakrishna Mission also 5-6 international seminars were there. I don't know if some representative of Anandamurtiji was there or not. 3 of the volumes are with me. So mind is a great fact, but beyond mind we have to go. So the psyche was considered to be something in the Western tradition. They were dissuaded from taking up psyche. So only mind is now there. So beyond mind they cannot think of anything. And soul, what are they considered to be soul in the Semitic religions? That soul is not Atman. And unfortunately we are translating Atman as soul, which is a mistranslation. Perhaps Sanskrit can be translated. Whenever we translate, we do some mistake, some blunder. So we have to come back to Sanskrit also, because he was a great lover, being mother tongue. His mother tongue was Bengali. He was born in that Bihar area, now perhaps is Bihar also now. And you see, he had so much of love for Sanskrit, so much of love for India, so much of dedication, almost a rishi. He was sometimes misunderstood in his own time, but certainly we must try to understand him and put him in proper perspective and work upon what he has left for us, this great nature, these great ideas and ideologies, these ideas with legs. And in Midsummer Night's Dream, one drama of Shakespeare, he tells that ideas with legs, these ideas are legs there, for him it is words, ideas with words, but here these ideas are also idioms. Then legs means how to follow, how to create small schools, good schools. India doesn't have good schools. I don't say this ICSSE and this CBSE, these schools are no schools, I'm sorry. Our schools are like nurseries, they're preparing our children to be sold outside. And this thing we are never looking into. We are a great country in any respect. We are the largest democracy, but unless we have some such morality, such ethicality, such humanity, and respect for our tradition, our good great culture, our Gita, Ramayana, Mahabharata and all that, and for Shrii Shrii Anandamurtiji, such persons, such great rishis, munis and acharyas, perhaps we have no salvation. So with these words, I thank one and all, and every paper was complete in itself.
Perhaps some of the papers could need a little more time, but time was very short. So because on these epidemic days, we are doing these webinars, and in a day, some more than 4 hours is something becomes more difficult to sit, because there are some tea break and some other things, but those things are not happening. So this is a kind of sanyama, and all those people, I hold it under Swamiji and all people. So namaskritya aham savatamsi viramayami. Thank you so much. Thank you. Swamiji, Professor, 1 minute, Professor Aravindaji. Professor Aravindaji, I shall do justice if I don't thank you, your department, and I was looking for Professor Rajendra Sarmaji. He's not here, he's dead now. So I also say namaskar to all you in the department. Thank you so much. Once again, I have already requested to our Vice-Chancellor to organize one national 2-day national webinar. He has given word that he will tell this thing to philosophy department, and the philosophy department will contact me. And we will very soon, we will also organize 2-day webinar in Kolhan University. Thank you, sir. स्वामी जी अभी चाय और भोजन सब ड्यू है, फिर आगे के लिए आप तैयार? सब ड्यू एक साथ हो जाएगा पूरा। सब ड्यू एक साथ पूरा हो जाएगा। Thank you, sir, for your valuable time. Have given full time is 6 hours. I think we have started our program 2 p.m. No? So now I think 6:30. So 5 hours continuous, almost 6 hours you can say. We have spent 6 hour time without tea break. Without tea break. Okay then. Again tomorrow we'll see you. Oh, namaskar. नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। ठीक है, तो फिर कल